A very good morning to one and all present here, distinguished guests, professors, and students. I am Rishabh Rai and I am a second year BTech student at NIT Jamshedpur. I am I am Shivani Sagar. I too am a second year BTech student at NIT Jamshedpur. We will be the host for today's event. It gives us great pleasure to welcome you all to the celebration of 5 days national workshop in advancement in mineral processing techniques with reference to iron ore and coal 2022. Without any further ado, I would like to invite Honorable Chief Guest Shri Uttam Singh Sir, Vice President, Iron Making at Tata Steel, Honorable Director Sir, Professor K.K. Shukla Sir, Chairperson AMPT Dr. Ranjit Prasad Sir, Shri Arun Kumar Swarnakar, GM MCL Sir, and Shri Bipin Kumar Giri Sir, CGM Goa Ore Mines, SAIL to the dais. I would now request to Honorable Chief Guest, Special Guest, and Director Sir to kindly come forward and light the ceremonial lamp. Please, sir. Shubham karoti kalyanam, arogyam dhan sampada, shatru buddhi vinashaya, deepakay namastute. Deepo jyoti param brahma, deepo ज्योतिर जनार्दना दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपे नमस्तुते. On the behalf of team, I now request Ranjit sir and Reena ma'am, and I would like to invite Chief Guest Sri Uttam Singh sir, Vice President of Iron Making at Tata Steel, Honorable Director Professor K.K. Shukla sir at NIT Jamshedpur, Chairperson AMPT Dr. Ranjit Prasad sir, Shri Arun Kumar Swarnakar, General Manager MCL Jamshedpur, Shri Bipin Kumar Giri sir, CGM Goa Ore Mines, and to the dais, thank you, sirs. I would now request our respected chairman, Dr. Ranjit Prasad sir, Head of Metallurgical and Materials Engineering Department, NIT Jamshedpur, to come forward and give a brief overview of the workshop. परम वंदनीय भारत माँ को याद करते हुए, क्योंकि उनके उत्कर्ष के लिए ही भारत का सर्वांगीण विकास हो, हम सब एक साथ लगे हुए हैं। माँ सरस्वती का वंदना करते हुए आज के इस कार्यक्रम में जो 5 दिनों का कार्यशाला है, इसमें लगभग 52 लोग रजिस्टर किए हैं अलग अलग स्थानों से, जिसमें लगभग 12 महिलाएं
और बाकी स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर हैं, एमटेक के स्टूडेंट हैं, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। लेकिन इस वर्कशॉप की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस वर्कशॉप की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री उत्तम कुमार सिंह जी, विशिष्ट अतिथि श्री विपिन कुमार गिरी जी, विशिष्ट अतिथि श्री अरुण स्वर्णकार जी, इन तीनों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। उनका हम स्वागत करते हैं। अपने निदेशक महोदय का स्वागत करते हैं, अपने उप निदेशक महोदय, रजिस्ट्रार महोदय, श्री गिरिजेश कुमार जी यहाँ आए हैं सिंदरी से, प्रोफेसर गिरिजेश कुमार जी, विनोद कुमार जी हैं, त्यागी जी हैं, और यहाँ उपस्थित सभी प्रोफेसर्स, उद्योग जगत से जुड़े संजय जी, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आयरन एंड कोल, ये दो ऐसा चीज है जो स्टील के लिए जैसे जैसे समय बढ़ेगा स्टील की आवश्यकता बढ़ेगी, इसकी आवश्यकता बढ़ेगी और हमारा चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम आयरन ओर का यूज कर रहे हैं तो लो ग्रेड आयरन ओर आ रहे हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लो ग्रेड आयरन ओर को कैसे यूज किया जाए। BHQ, BHJ जितना आयरन है उससे 10 गुना मात्रा में है हेमाटाइट से हर एक माइंस में, लेकिन हम उसका यूज अभी नहीं कर पा रहे हैं टेक्निकली, इंडस्ट्रियली। हमारे 2 स्टूडेंट ने इस पर PhD किया है, संजीव कुमार दास आज यहाँ हैं, रानू श्रीवास्तव जी। NML ने भी इस पर रिसर्च किया है, मैकॉन ने भी किया है, कई लोगों ने किया है, लेकिन वर्चुअली इंडस्ट्री भी रिसर्च कर रही है, JSW रिसर्च कर रही है, टाटा स्टील रिसर्च कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकली उसका यूज़ अभी तक हम इंडस्ट्री में बहुत नहीं कर पाए हैं। ट्रायल बेसिस पर हम लोगों ने आग्रह किया था कई लोगों से, लेकिन संजोग ऐसा होता है कि जब ओर के लिए तैयार होते हैं तो इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री के लिए तो ओर नहीं, भले एक जो सम्मिलित प्रयास होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसलिए इससे पहले हम लोगों ने 2 कॉन्फ्रेंस किए थे जिसमें कई भारत के गणमान्य लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उन लोग थे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में, और उसके एक सॉल्यूशन तक पहुंचे थे। और इसमें से हम लोग 5-7 लोग हैं जो IIT से प्रोफेसर हैं, IIMT भुवनेश्वर से हैं, ऐसे लोग मिल करके कैसे इसका यूज हो इसके लिए सम्मिलित प्रयास कर रहे हैं। और हम इसमें याद करना चाहेंगे एक मिस्त्रीलाल विश्वकर्मा को, जो बीते 25 साल से एक इकोनॉमिक्स, मिनरल इकोनॉमिक्स में MA करने के बाद भी इस फील्ड में लगा हुआ है कि मेरे गांव गुआ में कैसे जो इतना बड़ा पहाड़ है फाइंस और इतना BHQ का उपयोग हो सके, और वो एक से एक लोगों से सहयोग संपर्क कर रहा है। इस वर्कशॉप को लेके कल उन्होंने फिर हमको SMS किया कि सर उत्तम सिंह जी से हम लोगों ने एक बार बात किया था, व्हाट्सएप किया था, और उनको याद किया वो चीफ गेस्ट का देख करके कि हम लोग BHJ BHQ को जो यूज करना था उसके लिए, ट्रायल के लिए, तो एक बार बात कीजिएगा। तो मतलब ऐसे डेडिकेटेड लोग लगे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में इसका उपयोग कर पाएंगे। दूसरा है कोल। हम फास्फोरस, सल्फर जिस पर कम हो ऐसा कोल चाहिए, लेकिन हमारे पास जो कोल है उसका उपयोग हम कैसे कर सकें, इसके लिए हमारे एक स्टूडेंट मोहन राव जी भी उसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। अब उनका PhD सबमिट होने के ये में है। विद्याधर अरी जी NML से हैं हमारे साथ, उनके साथ मिल करके हम लोग कर रहे हैं, और उसमें भी एक टीम बनी है। और कैसे हम भारत में बने, भारत में जो हमको कोल अवेलेबल है उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके, और विदेश से जो आयात होता है उस कोयले पर निर्भरता कैसे कम हो सके। टाटा स्टील के T वेणुगोपाल जी थे जो वाइस प्रेसिडेंट पहले रहे, टेक्निकल हेड भी रहे, उनके साथ भी हम लोग निकट से काम किए, उनके साथ दो एमटेक के स्टूडेंट भी काम किए और इस पर भी काम कर रहे हैं। इसीलिए ये हम लोगों ने बीते बार वर्कशॉप के साथ में एग्जीबिशन भी रखा था और इंडस्ट्री वाले लोग आए थे, तो ये बड़ा है। तीसरा है इन्वायरमेंट, कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर के या जीरो एमिशन को लेकर के जो हमारा भारत, हमारे प्रधानमंत्री जो टारगेट लिए हैं,
तो उन सब को लेकर के ये केवल वर्कशॉप नहीं है, बल्कि जो एक्सपर्ट आ रहे हैं उनको हम लोग सुनेंगे, उनसे दिशा पाएंगे, और ये जो स्टूडेंट हैं अभी उनके दिमाग में आएगा कि इस फील्ड में हमको करना क्या है। मेन मकसद इस वर्कशॉप का यही है कि उनके हृदय में एक आग लगे कि हमको करना क्या है। एक बार पुनः मैं सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए, जो पूरे दुनिया में आयरन और कोल को लेकर के जो भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानते हैं, जो एडवांसमेंट हुआ है उसके बारे में जानते हैं, जो चैलेंजेज है उसके बारे में जानते हैं, उनसे हम लोग सुनेंगे। और साथ में हमारे निदेशक महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके प्रेरणा और सहयोग से ये हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। धन्यवाद। Thank you, sir, for your kind words. Now, I request our Honorable Director, sir, Professor K.K. Shukla, the patron of AMPTIC Workshop 2022, to come forward and give a welcome address. Sir, please. Good morning. Sri Uttam Singh Ji, Vice President Iron Making Tata Steel and Chief Guest of this inaugural function of second National Workshop on Advancement in Mineral Processing Techniques with special reference to iron ore and coal. Guest of honor Sri Bipin Kumar Giri Ji, Chief General Manager, Goa Ore Mines Steel Authority of India Limited. Guest of honor Sri Arun Kumar Swankar Ji, General Manager, Mahanadi Coalfields Limited. Head of the Department of Metallurgy and Materials Engineering and Chairman of the workshop, Dr. Ranjit Prasad Ji. Convener of this 5 days workshop, Dr. Reena Sahu Ji. Deputy Director, Professor R.V. Sharma, Registrar Colonel Rai, distinguished delegates, my faculty colleagues, students from different organizations and participants, personnel from industry, my dear students, ladies and gentlemen. A warm welcome to you to this inaugural function on 5 days workshop being organized by the Metallurgy and Metals Engineering Department of NIT Jamshedpur. And I'm happy to note, just I was going through the list of speakers or the personnels whom they have roped in for deliberation during this 5 days workshop are mostly from industry. And in fact, that's the need of the hour. I would like to call upon my faculty colleagues of Metallurgy and Metals Engineering Department and of course from other departments also, as well as to my dear students. Please do attend. The first thing is do attend this workshop, listen to the peers, interact with them, and the most important thing for us is to know what the industry is doing, what is the call of the day, and what we are delivering, what we are teaching. Is there any disconnect? And of course, if there is disconnect, this is the right time to connect ourselves with the industry. Just now, Vice President Uttam Singh Ji was asking to me, what is the placement scenario of Metallurgy and Metals Engineering Department? I said it's not good. And that's the fact we have to take it with a pinch of salt. Why it is so? Because we ourselves are not able to change. Are we teaching the same process of iron steel making which was taught 60 years back? I was just discussing with him, have you changed? The industry has changed? And definitely the answer is yes. That
industry has changed a lot. So as we as an academia, are we able to change? The answer will be mixed. Some may agree, some may disagree with me. But this is the true reality. So my dear colleagues, particularly, it should not be a only ceremony of 5 days, just you are wasting your time and some others' time. Come, listen, have a cup of tea and go away and don't change yourself. Then the purpose of workshop is just, it's a futile exercise. Please make it fruitful exercise. Not only you listen, you interact and change yourself. And change should be the dynamic. Technology is the fast changing scenario. I was few days back interacting with a scientist from NML, I think Dr. Sarmista. She's a man of electronics. She's in NML doing something on metallurgy. And she has a lot of patent. I was just interacting how you changed yourself. The answer was that I integrated electronics with metallurgy. And that's the need of the hour. Now coming to the subject, of course, iron is one of the need for development. But please excuse me, on other side of the coin, iron is not only a dearer material, but of course there is a need to think of some alternate materials of the iron, as particularly in terms of the building industry. We are looking for that. The reason is that iron, the production of iron, I may be wrong, I may be excused, that as Dr. Ranjit talked about, the last segment of the environment, which we as a country are committed to also for the zero energy. It involves a lot of energy. And from where we are deriving energy, the second term is the coal. Are we thinking some substitute alternate of the coal? Because most of the energy we are getting from the fossil fuel, which is being utilized in the production of the iron. And this fossil fuel, energy from the fossil fuel, is also adding extra weight as far as the carbon footprint is concerned. Are we thinking of our future generations? In the sake of development only, are we not compromising with the environment? Are we not compromising with our future generations? Once I came in Jamshedpur, I saw the peculiar situation here. The people, industry people sitting over here may give the answer. Just now you go to the second floor. And if it is not clean daily, you will find a layer of the black dust. Are we not inhaling? That's in a finer particle, suspended particle. You can argue that we are developing, contributing something economy to the growth of the country, but are we not contributing on the negative side? So whenever, please do deliberate. I'm not a man of metallurgy. I'm not a man of material science. I do deal in mechanics area. My call is not only you discuss about the processing aspects, but you have to discuss about the green technology for the processing. That can we develop and design a process for steel making which involves almost zero energy. Because, my dear friends, we have to think of several zeros, which I call upon. If you call zero energy. So technology, all the technologists and industries, academia, industry and technologists have to work in synergistic manner to think upon zero energy. Then only you can think upon zero pollution. And only if these you two meet, then only you can think of the zero poverty. So 3 zeros can be met with the 3 C's. Curiosity, commitment, and of course conviction. So my call to my young friends who are sitting backbench, please do attend the workshop. Don't allow it to be one-way flow. Don't put any wall between you and the speaker. Make it a bi-directional. Ask your queries. And you must have this why.
I don't know whether you ask in the classes or not. But whatever we teach, you must stand up and ask to us why we should study this topic. Why this is so. What is the relevance? And we as a teacher have to give you the answer why you have to do this thing. So don't kill the inquisitiveness within yourself if you want to learn. So during these 5 days, you have the excellent speakers with you. Please interact with them and then try to change yourself how you can contribute to this cause of the nation. That's my prayer to all of you. I hope sincerely that at the end of the workshop, you will be immensely benefited with some newer technologies. And at the same time, I am just trying to put a pinch of salt to the metallurgy and materials engineering department, the faculty who are sitting over here. At the end of the 5 days, they will go back, sit together, and they will change the syllabus as per the need of the industry, as per the need of the hour. Not only this will be exercise and annual exercise, come, eat, and go. Please do change here. Do change yourself. Whenever you meet next time, you say that we got benefited from this exercise and we have changed ourselves. And next time when I meet Sri Uttam Singh ji, my answer would be that now the placement of the metallurgy student is at par with the CSR. You see, that's my dream. Thank you. Take care. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your warm words. We are very delighted to have you here. On the behalf of team, I now request Ranjit sir and Reena ma'am to present the bouquet of flowers and memento to our honorable chief guest, Shri Uttam Singh sir, Shri Arun Kumar sir, Shri Bipin Kumar Giri sir, and Director sir as our token of respect. एक दिव्य प्रकाश हाथों हुआ पदार्पण है, ज्योत से ज्योत सजी, सज गया विद्यालय का प्रांगण है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, पधारे गए अतिथि को मेरा अभिनंदन है। Thank you, sir. Now, I invite Shri Bipin Kumar Giri, sir, our guest of honor and the Chief General Manager of Goa Ore Mines Steel Authority of India Limited to share his experience and views with us. Sir, please. नमस्कार, सुप्रभात। In the temple of knowledge and wisdom at NIT Jamshedpur, which is known for producing stalwarts in the field of industry, science and technology, who are serving this nation in various capacities across the world. It's my proud privilege to be present on the occasion of this 5 days workshop on mineral beneficiation, advanced techniques, which is the need of the hour
And after seeing the bright faces and the fountain heads, the future of science and technology, I remember my school day, my college days, when I was as a student of School of Mines, Dhanbad. So I would like to say on this occasion that ऊर्जा और उमंग से भरे थे, ऊर्जा और उमंग से भरे थे, बिल्कुल सरारे जैसे थे। नए नए जब थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। A compliments to all young faces sitting over here. Honorable Patron Shukla Sahab, other dignitaries on the dais and off the dais. As the topic goes, Shukla Sahab was telling, see, development and environmental growth both should go hand in hand. That's the call of nature. And on this topic on which this 5-day workshop has been organized, I remember a sloka of Sanskrita. Swasti prajabhya परिपालयन्त न्यायन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणेषु शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. All the purpose of all endeavor of science, technology, economic and other activities is to conserve life force on the earth. And one end, there are challenges of growth, there are challenges of economic activities, there are challenges of finding the Jagat Guru, the position of Jagat Guru in the world. On the other hand, there are environmental challenges. As we witness day in and day out, that earlier when we used to drink the water from the stream, now we are drinking water in the bottles. Earlier, masks and COVID pandemic was the rare, but right now the world is suffering from COVID. So it gives us a, opportunity to introspect how industrial growth, economic growth, social upliftment will go hand in hand. This initiative of NIT Jamshedpur will go very far in realizing the right meaning of the sloka I had told earlier, that it is the moral and state duty of those who are educated and are in powerful positions to make life easier for the greater mass. And this topic, the subject here, which has been chosen for this 5 days workshop, is very, very pertinent. Industry has its own constraint. Government had its own parameters. Academia has got its own role. We all are working tirelessly. We all are working in our spheres very hard. But as has been said rightly, that we must know each other. The way our body, when during walking, you will find that when our right leg goes forward, our left hand goes back. So there should be a balancing in the sense that our collective vision, collective purpose should be fulfilled. So it is going to happen
through such interaction where industry, academia, and government will sit together and chart a roadmap. As an industrialist, as a person from industry, we make all out efforts to take care of the environment, to follow all the rules and regulations. But one thing, in the world, in the era of globalization, today's business environment is, I will say, is just like surfing on a turbulent tide, where timing and positioning with respect to emerging business scenario, market scenario, will decide where the company will perform or will perish. So that's another constraints industry is facing. Uncontrolled competition. There has been difference in philosophy of working of a PSU and other our competitors. So that's another challenge. But amidst all that, we must not forget our duty towards environment, towards humanity, and at the same time towards our contribution to science and technology. Friends, we have got a great onus on us to make our dream country, India. So, on this occasion, I will urge my young friends to make innovation their part of their attitude. It's innovation and creativity which will find the path ahead. The maximum utilization of solar energy, minimizing the use of fossil fuel is the need of the hour. So we should make innovation the part of our attitude. Once we'll make innovation our attitude, then it will reflect it in our behavior, in our thinking pattern, and ultimately then innovation will become a culture. There are examples that our friends, our engineers have gone for a very frugal solution. In a low cost air conditioning, a cycle which will generate energy, and it will nowadays electric vehicles are coming. So these are the area where our young friends should think, and I beg to differ from Shukla sir that if India of tomorrow is going to be the prospective one, then metallurgy is going to play, metallurgy and material science is going to play a very, very vital role. Only thing that we are not able to motivate the young minds. I am sure this workshop is going to give a serious brainstorming among the brilliant students, the future of our country. I wish this 5 days program a grand success. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your warm and very motivating words for us. Now, I humbly request our esteemed guest, Shri Arun Kumar Swarnakar, sir, General Manager, Mahanadi Coal Field Limited, Jamshedpur, which is one of the major coal
Okay. Uh, Angul in Odisha, which is one of the major coal producing company in India, to come and give his views in prestigious workshop. Please, sir. धन्यवाद। और आज के ये सेकेंड नेशनल वर्कशॉप 5 days एडवांसमेंट इन मिनरल प्रोसेसिंग टेक्निक्स इन आयरन एंड कोल के पेट्रॉन श्री के शुक्ला साहब, आज के चीफ गेस्ट श्री उत्तम सिंह साहब, विपिन गिरी जी और इस कार्यक्रम के चेयरमैन श्री डॉक्टर रंजीत। आज सम्मुख बैठे हमारे इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट के इमिनेंट पर्सनालिटीज, इस देश के होनहार और मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आप सबों को अभिनंदन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में हम सबों को यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सबों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जैसा कि आप सबों ने अभी इसके प्रारंभिक कार्यक्रम में सुना, हमारे पेट्रॉन यहाँ के डायरेक्टर श्री शुक्ला साहब का बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ आपके वर्ड्स आए, जो निश्चित रूप से आज के सिनेरियो में बहुत ही आवश्यक है। चेंज इन माइंड, चेंज इन क्लाइमेट, चेंज इन आवर इंडिविजुअल्स, ये सारे चीज़ में हम सबों की चेंज की ज़रूरत है। और 3C में इन्होंने जो बोला है, तो ये चेंज ही ऐसी चीज़ है जो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। चैलेंज आएगा, हम लोग चेंज करेंगे। और आज बदलता हुआ भारत भी चेंज ही हो रहा है। बदलते हुए भारत में आज हमारा जो ग्रोथ है वो 2 चीज़ों पर मुख्यतः डिपेंडेंट है। वो मुख्य रूप से कौन कौन है जिसका आप वर्कशॉप करने जा रहे हैं? ये आयरन एंड कोल। आप जानते हैं कि आपके इकोनॉमी की, देश की इकोनॉमी का रीढ़ इन्हीं दोनों पर है। डेवलपमेंट की भी पैरामीटर्स में यही दोनों आते हैं। इसके साथ साथ डेवलपमेंट अगर देखा जाता है तो एक सीमेंट का भी कंजम्पशन आता है, जिसका भी कोर सोर्स हमारा कोयला ही होता है, जिस पर मैं आज आपको कुछ इस सेशन के बाद आपको हाइलाइट्स दूंगा। बदलते हुए सिनेरियो में कोल जगत में, और कोल जगत में वो भी कोल इंडिया जो एक है इंस्टीट्यूशन जो देश की सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है, उसके बारे में आप सबों को जानना भी जरूरी है। मैं आपको आने वाले सिनेरियो की भी जानकारी दूंगा। अभी चेंज कोल में काफ़ी आए हैं। कोल आप जैसा कि जानते हैं कि ये सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है और इट इज़ एबंडेंटली अवेलेबल इन इंडिया है। सो इंडिया में आने वाले और करीब करीब 200 से 300 वर्षों तक कोयले की आवश्यकता होगी और कोयले का आपको ज़रूरत पड़ेगा हम सबों को एनर्जी के लिए। हो सकता है इसका रूप अभी जो सॉलिड फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल के रूप में ना रहे, इसका रूप बदलेगा और अभी हम लोग बदलाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। कोल इंडिया इसी तरह बहुत सारे बदलाव को एडॉप्ट करता हुआ अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बन चुका है। सिंगल कंपनी में जो कॉरपोरेट के लेवल पर है और सिंगल कोल प्रोड्यूसर कंपनी इन दी वर्ल्ड। निश्चित रूप से प्रोडक्शन के लेवल पर अभी हम 3rd पोजीशन पर हैं। फर्स्ट आपका चाइना है, सेकेंड आज के डेट में भी अमेरिका है, लेकिन हम लोग लग रहा है अगले साल ही अमेरिका को पीछे छोड़कर हम लोग
इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाएगा इन दी वर्ल्ड। और उसमें 24-25 में जो हमारा एक मिशन है कोल इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हम लोग 1 बिलियन टन कोल प्रोड्यूस करेंगे, उस समय आपके एनर्जी के लिए, आपके आयरन के लिए, आपके इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुतायत रूप से हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप आज इस सेशन में, चूँकि आपका ये सेशन मैं संक्षिप्त रखना चाहता हूँ, आपके और ये जो प्रेजेंटेशन होगा आपके क्वेरीज भी होंगे, आपकी उत्सुकता होगी, क्योंकि क्यूरियोसिटी जैसा ये के शुक्ला साहब ने बोला है, आपको क्यूरियोसिटी रखना होगा, तभी इंडस्ट्रीज़ में और इंस्टीट्यूशन में काफ़ी आप तरक्की करेंगे। तरक्की करने के लिए हम सभी उद्यत भी हैं, देश चाह भी रहा है और हम देश की इस परिकल्पना में अपने हाथ बटा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आज अभी अपने एक वक्तव्य को यहीं संक्षिप्त रखता हुआ आप सबों से जुदा होता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Before requesting Shri Uttam Singh sir, I would like to request all other dignitaries to sit in that place to have the presentation. Now I would like to call upon Shri Uttam Singh sir, Vice President Iron Making Tata Steel, graduated from IIT BHU 1992 and has been serving for Tata Steel for last 25 years. Mr. Singh has also made significant contribution in blast furnace, understanding evolution of refractory design and also improvement in slag granulation system design. He also has total accounting of 22 international national journals and 1 patent. I would now request respected sir to please come forward and enlighten all of us with his knowledge and experience and guide us to the right path. Please, sir. So thanks, kid. Thanks, to all the distinguished guests on the dais, to all the faculty members, and my dear students. You know, metallurgy, I also understand, is a boring subject a little bit. But here, for the next 20 minutes, I'll tell you a story. It's not data, story. So why don't you guys sit down? Please sit down. Please, sit down. Please enjoy. Don't be so tense. If you're tense, you'll not absorb. So as most of you sitting there, I also come from middle class. So in 92, 88, I also gave the JEE and all the exams. So I got through. I didn't get through the first time. I didn't get through an exam. No BIT. That time used to have BIT and IIT, Roorkee, all that. तो कहीं हुआ नहीं. तो ये दुखी, सब दुखी. भाई middle class क्या करेगा भाई? So I was then decided to go for coaching. I went to Patna coaching, as is the norm. And I did a coaching for 1 year, worked very hard. And then I got into this IIT. Again, IIT stuck. Why did you study metallurgy? Because you didn't get computer science. In fact, honest. Let's be honest. Sometimes we should be honest about ourselves. Why did you study this? Yeah. Same with me. So metallurgy in BHU, I was asking this question to Professor Shukla also. I mean, we just had, the batch size was 40. We just had 20 students actually. That's what you study metallurgy actually. I think what used to happen, guys from lower rank used to take good branches in NIT and state institutions. So job was not an issue for us actually. So we all got 2 jobs. And standard, SAIL, Tata Steel, standard. We all got that.
And, again, I'll tell you some story because, it will resonate with you, actually. So when you are filling the form for Tata Steel in 92, 91 actually, maybe 1 year before. So our seniors told, don't apply for system training. System training apply mat karna, apply for Gaiot training. Gaiot training is like the damad of Tata Steel. Please apply for that. So we Gaiot training tick kar diya. And I tell you what happened when we joined Tata Steel. Very good company. I'll come to what the company was then. When I joined Tata Steel, there were some 75,000 people producing less than 3 million ton. And today we are at, I'm just telling you this number actually. Today we are about 45,000 producing 20 million ton. The ratio. कोई ऑफिस नहीं, कुछ कंप्यूटर नहीं, कहाँ बैठना है. You come as a young graduate trainee to do some improvement, to talk. There's energy. वो बॉस बोलेगा तो चीफ बैठा हुआ है, जीएम बैठा हुआ है, बोलेगा तब काम होगा तो होगा नहीं. It is very frustrating, very frustrating. And I, again, GT में भी rank होता है, so I didn't have good rank. I end up in blast furnace. That too is called the old blast furnace. Everything manual, meter, analog. Very, very frustrating. No office, nothing. No computer, nothing. And if you go now, it's very different if you join there. And the system training in 92, you know what happened? The Indian IT boom started. IT boom. और 92 में जो इतने जो बैड रैंकर्स थे, जिनको जीटी नहीं बने, जो सिस्टम ट्रेनिंग बने थे, they all resigned en masse, went to US. En masse. 92, all system training resigned. The 75 of them and went to US. And just imagine, and we were supposed to be the better crop. We ended up in blast furnace. Very frustrating. 10 कच्चा जाम, हाथ से काम करो, and nothing. So that was a starting point. And, when I passed from metallurgy in that time, so I was told by those professors कि देखिए उसमें liberation just हुआ ही था, नहीं हुआ था. And Tata Steel was almost making huge loss, not loss, but marginal profit. And we were told that if liberation happens, then our steel industry will close down because we are unprofitable. Our costs are very high. Okay? I was coming to our industry with that background actually, where everything looked very negative, everything looked very sunken, and there's no energy in the system. And then I'll just tell you one more story before I move forward actually. And that's why I'm going to tell you a story actually. And this will be a story that you all love. I mean, data uta dikhayenge, but that's just to tell you, support my theory actually. In 1998, I got the chance to go to Japan first time in Japan. Because, today, thankfully I visited most of the steel companies around the world actually. So one advantage of working in process metallurgy is that you can get to visit every place, yeah. So I went to Japan first time. So when I went to Japan to learn Nippon Steel Corporation, so when I went to Japan, I said, ये देश से कुछ सीखने को नहीं है. Japan is, is not Earth, it's beyond Earth. इसमें सीखना क्या है? इसमें you don't worry, don't try to learn this. We can never be Japan. India तो India है भाई. Japan कहाँ से बन जाएंगे हम लोग? And although I was very sincere guy, I used to take a lot of notes in everything, but I know that we can't even do anything. Yeah. So I was just maybe 30 years old. कुछ possible नहीं करना. Indian steel industry is all sunk. High. I'll tell you examples. High ash and high alumina. We can't improve. How can we improve? They run with very low alumina, very low ash. They'll do good, and their systems, electronics are very good. Everything is good. So how is it possible? And our focus then was just to buy foreign goods, 98, very early days. So our focus was to buy cheap foreign goods to take back home. That's the focus. Notes likhna tha, just because the company has sent you to get exposure, I was taking those notes, but not with a purpose that I'll do something back there. But I'll just tell you one image that I still have. I tell you, 1998 mein ek image of Japan, one image. Please remember this. It was winter evening, about 8 or 9 p.m. Japan में population बहुत कम है. So we are going on the road, and light system है. And I saw an old woman standing on a red light on the road, and there's no vehicle on one to this side, one to this side. But she's waiting
when the light becomes green, तब हम क्रॉस करेंगे. There's no vehicle. There's you can see both sides, and we are amazed why she's standing actually, because we come from India. We don't care. Rules are not for us. But that enduring image has stayed with me. And kids, all of you should always have this image in your mind. Japan is Japan, not because anything else, but because of people actually. If that lady has such a great discipline, even in the night, standing alone and there's no traffic, but she'll wait for a light to turn green to cross. Japan is still Japan. And I tell everybody, my colleagues, everybody, life में कुछ का discipline बनना है भाई. Discipline नहीं कुछ नहीं होगा. So that's how we started. That's the story. That's the background. So how do I change this? Okay. So my first point is this: you should have passion for excellence. Can I use a mic actually? Can I use a mic? Are you really comfortable? I can turn a little bit. Huh? Yeah. No, I can. Yeah, I would love to little walk around and do this. I'm a very energetic guy. Yes, so yeah. Yeah. Thanks. So yeah. Yeah, sure. The first starting point for anything, technology, life, anything. Yeah. One thing is you can keep cribbing. ये ठीक नहीं है, India ठीक नहीं है, हमारा road ठीक नहीं, power ठीक नहीं. We can cry aloud. हमको metallurgy मिल गया, क्या करेंगे? Yeah. But the passion of excellence is the first thing. And I tell you examples when I, give you all the whole thing. And this is what this is. If you're passionate, कुछ करना है जिंदगी में यार, life में कुछ करना है. I can't waste my life. This is a starting point, and that drives extreme motivation, and that drives you. Is it okay? Yeah. So thanks. Okay, and that is what drives extreme, human unity. Why I say you this? Whether in my personal life and whether in plant, I will always pursue excellence. Always, every time, anytime. If I'm even going to Bishtupur my car and I see zebra crossing, I'll try to stop. I know पीछे से लोग आ रहा धक्का मारते, but I'll go slow down. I'll respect the old men to cross. Life is about respecting people, respecting the system, and then you can change. So I'll now start with examples. I'll not tell you theory. I'll tell you some result. Huh? So blast furnace, you all, what is iron making? So all the sinter plants, the pear plant, the ore, the raw material handling system, the coke plants, the piper plant is a huge, 60% of any steel plant, or the area-wise, is iron making, blast furnace, and they're all, as Professor Shukla said, they're all dirty and old and unlike the cold rolling mills, they are not very sophisticated, or they apparently not look very sophisticated. But पूरा steel making का, the steel industry का, the cost economics and all the KPI inside here, the cost is sitting here. In the pear plant, the sinter plant, the coke plant, the byproduct plant, the blast furnaces. So, this is what is the problem. Huh? I'll just tell you quickly, I'll move. You know what? I just tell you this number is very important. Coke is the most important energy, because we have to import coal from Australia because ash is high and we don't have enough coal. So we have to import coal from Australia. Okay? Now, just remember this number while I speak for a little while. Huh? Our cost of coke, is, if I reduce my coke by 1 kg, the cost will come down by 34 rupees. Just assume 40 rupees for simplicity. So, अगर मैं 1 kg को कम कर सकता हूँ तो कॉस्ट घटेगा 40 rupees. ठीक है? Now put this 40 rupees on a scale of 20 million ton, it will be about 80 crores. ठीक है? So if I reduce my cocoa by 1 kg, I'll save company 80 crores. ठीक है? If I do by 10, it will be 800 crores. And if I do 100, it will be 8,000 crores. And that's the story. Yeah, thanks. So ये number इसलिए याद रखिए just to just tell you the impact, the whole thing, the impact. If I reduce my cocoa by 1 kg is about 40 rupees. 40 into 20 million ton का base में is about 80 crores. ठीक है? It's just a this number.
No, so, we did a lot of benchmarking. मतलब कैसा चलता है हमारा furnace compared to other blast furnace in the world, huh? So if you see this benchmarking, ये हम लोग का furnace है, 450 kg coke rate, 450 kg coke rate. And look at Swelgan, this, that, Dringen, Toronto, Imodine. Yeah, Imodine, हम लोग also Europe का blast furnace है. This is European blast furnace. It's part of us. 276 kg, 276. और जब हम लोग इसे मीटिंग करते थे ना, तो बड़ा समझ आता था कि क्या बात करें यार, ये लोग तो 270, 280 का बात करते हैं, हम लोग कहाँ 450 में क्या बात करेंगे. तो and this is, I'll tell you data this, and again our refrain was, we are Indian. और कहाँ बहुत अच्छा तो होगा नहीं क्योंकि our ash is high. You see the ash is very high. हम लोग slag बहुत high है. हमारा our alumina is very bad. We will blame the world. We will blame everything. And say, if this material, iodine wants ash of 10%, they slag it, we'll put iodine is 200 kg, तो हमको दीजिए तब ये बनेगा. यही थ्योरी था हमारा. और this is still, you look at the number, huh? Till FY15, यही थ्योरी था. Nothing will change. भाई हमारा raw material खराब है, what can I do? And so blaming raw material quality was, this is a mindset tha. This is what, we had big experts and there are many people who were there, but this is a mindset till 2015. And then we said, what can we do? Can we do something different? Can we try something? So I'll not get into all these details here, time itna nahi hai, but we started looking at every possible thing, and a lot of youngsters like you who were working with me, I was the chief of blast furnace, who were working with me were fully involved कि boss with R&D technology कुछ हम लोग करने सकते हैं नहीं सकते हैं, can we do something or not? And then this happened in 2014. There's an iron ore crisis हुआ. Crisis ये था कि if you there was Saha Commission, and you guys will recall a lot of mines were closed down. Tata Steel के Normandy mines को बंद कर दिया गया था, for some period. And then we said, don't, again, life number 2 में theory ये है, there's no failure, success in life. There are only learnings. There are only learnings in life. कोई ये बोलता है हम successful हो गए, तो success बाद failure ही आता है, and failure बाद success आता है. So there's nothing called success and failure in life. And we had a crisis. Don't waste a crisis. Never ever waste a crisis. There's no crisis in life. Crisis is just an opportunity to do some great improvement. तो जब crisis हुआ, तो हम लोगों को चाहिए iron ore नहीं था, so we had to stop or curtail the production. And then we started unleashing, because production pressure nahi tha, because there's no iron ore. We said, can we unleash some trial? Can we do something different? Some new regime which has not been tried, in our context. And that is where we had a changing actually. And this, I'm telling you, I was there with all the youngsters, and I said, look, let us do something different here. Let us do something different. And this is when the whole story started. And we did a lot of changes, in distribution, all that stuff, gas utilization, these stuff. You all know this, but we'll discuss in detail. We did a lot of trial plan, everything. And for the first time, suddenly, we saw the coke rates have come down from 490 to 446. 50 kg, huh? So I said 1 kg is 80 crores. 1 kg is 80 crores. 50 is 400 crores. Got to complete a bottom line, this is a benefit coming to straight to company. So we said, okay, what's happening here? You can see some difference happening. What's happening here? So the first time we started saying, no, it's not the raw material. It's our mindset which is the problem. Arey, road theek nahi hai, it's not, we can't innovate. Human ingenuity has no end. And then, look at this number, huh? 479, 450, 450. जहाँ पर क्राइसिस हुआ, हम लोग नया ट्रायल किया, and the coke rate came down 80. 447 to 380, 70 kg. और मतलब आपको हिसाब दिया था ना, 1 kg होता है 80 करोड़. 70 kg होगा कितना? 17 to 80. I mean, suddenly company, just straight going to bottom line. Or same, again, I'll come to this, and started increasing the coal rate also. And then we said, we'll not stop here. Can we go beyond? हम लोग बोला कि वर्ल्ड का बेस्ट, lowest coke rate and the highest PCI rate, can we achieve that?
which only our European colleagues, iodine does that. Iodine में ये चलता है. But वहाँ पर क्या है, बहुत अच्छा raw material है, हमारे पास नहीं अच्छा raw material. But can I change? Can we change that thing? So is this a paradigm? I tell you, we had this huge conference, where I was there with all technologists, young people of the company to brainstorm. Let's try this here. Kya hoga, we'll go back. And we made a huge trial plan, everything, specific oxygen content, ye, wo, blah, 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 and we did that. And then, when we started a trial, we had this, WhatsApp group. And this is exact, see the hourly numbers. 10 baje, 2 baje, this number. Why I'm putting this slide is, you look at this number, this is, the red one is the coal rate. It was 151 at about 10 o'clock, whatever. Ooh, it went to 200 kg plus, highest in the world. I couldn't believe this. Having worked in blast furnace, all this thing, I couldn't believe, I said, look, furnace hang kar jayega, furnace will get disturbed, no boss, furnace was running very smoothly. The furnace running very smoothly, and we achieved one of the highest PCI in the world. I was, what's happening, man? What's happening? Then, I realized that I was a bottleneck. I was a bottleneck to not to allow that. We, as a leadership, are the bottleneck. Human mind, and then, what I want to tell you is that, what we did everything. Landscape design change, studying, CFD modeling, toward them. A lot of stuff was done, cold combustly, we did everything. And we got this. With the same. So, and I'll just tell you the last slide. Again, ये सब याद रखिएगा, please. When you grow up in life, knowledge and idea on the functional designation. Is that I am a vice president iron making doesn't mean that I am very knowledgeable in iron making. Sorry. It's a guide, a ground, and including everybody. So ये बात हमें याद रखिए, everybody in this world is intelligent. I just got a chance to express myself. My father pushed me to pass a particular exam, and hence I'm classified brilliant. I'm not a brilliant guy. I'm a very average guy, but I always try my best. That's the only thing. Please collaborate. Please collaborate. Life, man, don't assume even that, जो चाय पिलाता है या पिलाती है ना, is also intelligent. If you ask some ideas about life improvement, she'll give you something. Please trust me on this one. Please collaborate. Please. And don't say that he's not good, he's not good or something. And never waste a crisis in life. There's no crisis. There's only a door to be opened which you can't see. Why I'm saying this? And then, after this, there's an avalanche of ideas. Well, avalanche मतलब चूंकि हम लोग सबको everybody is thinking, we had huge number of ideas to improve. I'll just give you some example. Digital may all the stuff. Tata Steel is the only company which has 3 sites, Jamshedpur, Kalinganagar, and Imodin, which is a global lighthouse in digital in the world. Only company. There are 3 sites is global digital lighthouse. Huh? And then we had, today if you go to any control room, they have huge models running. Everything running in model. And Tata University is a very prestigious award given by the chairman for good results. So, we got 2 awards here. Again, these are very examples of digital stuff. Everything, if you want to raw material, don't take sample. Just do an online scanning. Material aayega, or slag detection system, all automatic. Huh? And again, this is an example. We have a lot of staves. I don't know how many of you read iron making. There's staves. Now, stave ka life is very important. It is a cooling system of the furnace, and it's like a pipe within a copper. Rolled copper. Now, suppose it burns, you can have problem. Water going in the blast furnace, something problem. So you want to inspect that. We call a big party. They charge a lot of money. I don't know to take the name of the company here, but they said we'll charge few crores. It's our R&D guy who developed a very simple technology to do that. And today we are actually providing technology to the world actually. Yeah? So we are doing this ourselves. Again, this got an award by the chairman. And then you tour over, we should get from Korea and Japan. Today we make in Bokaro, with our own design. We have developed our own design, own thing. We are doing everything around the world. And everything, we have our own cameras, developed by Tata Steel, which actually is now patented. All these tours are patented. And this all is made in Jharkhand or somewhere. Huh? And again, this is the story. Cockpit come in, everything. And
बाकी देखिए रॉ मटेरियल सेम है. द स्टोरी इज, वो तो था मूवी कयामत से कयामत तक, था कयामत ही है, अभी भी कयामत ही है. The slag is going up 340, 360 and 370. The ash is still the same, even higher. But the whole thing has changed. Everything has changed. And you just imagine the saving, because this is almost $1 billion, 7,000 crores. Bottom line, state bottom line impact. There's nothing, it's, you import less coal and companies save so much. Now we are saying that, we have developed with R&D, give me any slag grade, 400 kg you give me, I still have the same result. We have developed special, very low cost fluidizers, not calcium fluoride or something, very special grade kiye hum log. Then, how do you work the slag chemistry? Everything, we have optimized a model. Everything runs a model today. If you go to blast furnace or sinter plant, coke plant, everything runs a model. And everything has a brain, a digital system. And one thing I tell all of you, you should all learn any digital language. Data analytics should be part of your curriculum. आपको data analytics सीखने क्या है? Because metallurgy has data, and you should know something on data analytics. And you can learn through your, Google or whatever, you can learn that actually. And even the productivity is highest today, 3. 3 is, you can't imagine, when I joined blast furnace in 93, it was 1.05. मतलब 1 meter cube से 1 ton. Today we are achieving 3. Our slag rate बढ़ गया, सब बढ़ गया. So everything going adverse, but still our KPIs are better, or one of the best in the world. And again, why I'm saying this before I move forward to Sinter and others, small example. I remember we used to overawed by Iodine, by other companies. Today, all these companies are doing benchmarking with us. We get requests to help BlueScope or some other company all the time. So today, instead of, we being overawed by them, we have become a knowledge provider to them, to the world. And that is something I want to, this is what I leave you with, So, even this interviews, we used to first say, mindset was all the control rooms next to the plant. Today, all these control rooms are at distance, 5, 10 kilometers away from the plant. And one control running the whole operation. Huh? And things like, if somebody knows return fines and all that, we have reduced by half or something. Productivity बढ़ा दिया, stack emission. Again, I think Professor was talking with that. हम लोग पहले इतना करता था emit 161 kg per hour. And through digital solution to better process understanding, same hardware, only through digital understanding, data analytics, we reduce from 116 to 112. Same. And production has gone up. So now, even at a higher production, from FY19 to FY22, our stack emissions, dust, what he was referring to, has been almost half, because production has still gone up actually in the period. And same is solid fuel. In coke making, we have developed with the R&D special polymer which can use 30% non-coking coal, 30%. We can actually do that. And whether, wet quenching, again, how do we use through data analytics understanding, moisture को हम lowest कर लिया हम लोग. Same hardware is same. It's not that we put up a new plant or something. Same hardware, but through better understanding and through data analytics and collaboration, young people involvement, all the result. Yeah. And again, I tell you, this is a small example. Today, all the locomotives are some 70 years old. Huh? Same को maintain के चाहते हैं, but today everything runs on digital. All this remote चलता है, remote से, there's nothing. All the locomotives run by remote. One person operating the whole thing. Even the point changing, is technologically done. And we used to have huge problem derailment, it is 0. So what I'm saying is that same asset, same people, only the mindset change can make a huge difference to the whole thing. Anything, asset, proper life, this, that, I can go on. And again, sustainability, I think I'll just give you a stack emission. See the numbers that we have come down, CO2, carbon rate. We tried the cold-built methane. We're working on charcoal injection. We're working on hydrogen injection in blast furnace, which we'll do by the end of this year. And even look at this water consumption, small point. We are the best, one of the best in India and one of the best in the world. Water, pani. सबसे कम पानी use करेंगे हम लोग. Again, it's about small ideas to do that actually. And these are different ideas.
And this is the last thing. So we've called me for 2 years. We'll present it to you. We'll put in the first plant in the world of a Haisana plant, which will eliminate blast furnace, coke plant, sinter plant. No blast furnace, no coke plant, no sinter plant. You just actually have to inject the iron ore powder and the coal powder and oxygen. And you get hot metal, which will be very low phosphorus. Because sulfur to high rahega, but low phosphorus. And very good for us. So we plan to put the first plant in the world next 2 years. So, this is something is one of our passions. So we are working on this very strongly. And of course, we are collaborating with obviously Europe and US company, Nucor. And again, all this stuff on hydrogen, a lot of things is happening. And I'm very particular. People should read paper. People should discuss, building thinking. And also a lot of lady employees are working here now. We have a lot of lady officers working with us. So please try to join us. Day-to type behavior. Thank you. So, I hope you enjoyed this. My idea was, constant is here. There's no other constant in the world. And all of you kids sitting here, all the faculty sitting here, all the people from industry, it's our job. We are the problem, and we are the solution. Try to innovate. Try to make something of your life. Don't say in the including your personal life. For example, I just climbed 7,000 meter 3 months back. I plan to climb Mount Everest in next 6 months, maybe 1 year. I take a lot of fitness thing. I'm a yoga enthusiast and all that. So, but even my personal life, I read. I don't waste time. I don't watch movies here and there. Please don't waste time only watching Netflix. If you're watching Netflix, the only question I ask a youngster, how do you spend your spare time? Please enjoy. Please drink and have dinner. But if you're only watching Netflix, you're wasting your life. And all the systems, you're a young guy, be physically fit, strong, read something, do something, computer language padho, ye padho, wo padho, naya cheez karo. Don't be constrained by any system. You define your system. Thank you. God bless you. It was indeed an excellent talk by Sri that the problem is here, our thought process. We have to change ourselves. And the example he gave of Japan, I charge upon you people. Can in NIT Jamshedpur now the next examination would be without any invigilator? Yes, why not? Why not? Yes, you should say yes. And for the faculty who are sitting here, can there not be any administrator? You are in the campus from 8 a.m. to 6 p.m. You are going to your classes regularly without nobody, no checking, no attendance requirement. If it is there, then only his message is there. Otherwise, it is listening and it is tangential. So we have the mental block. Erase it. Have the commitment, have the passion. That was his message. I thoroughly enjoyed, sir, your lecture. And indeed, it was one of the best lectures which I have listened to. I must congratulate Sri Uttam Singh ji. Thank you for enlightening us, sir, and stimulating us with your wonderful thoughts. We are pleased to have you here. I would now like to call upon the convener of AMPTIC-2022, Dr. Reena Sahu, from Metallurgical and Materials Engineering Department, NIT Jamshedpur, to kindly come forward and give the vote of thanks. मैं अपने डायरेक्टर सर से आग्रह करूंगा कि एक मोमेंटो है, अपने यहाँ उन्नत भारत अभियान चलता है, तो उसके द्वारा ही गांव में प्रशिक्षण दे करके ये गांव के लोग बना रहे हैं। तो अपने तीनों गेस्ट को ये मोमेंटो दे।
नमस्कार सभी प्रेजेंट है यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू respected and our most distinguished chief guest of the day, Sri Uttam Singh sir, VP Iron Making, Tata Steel, Director sir, today guest of honor Sri Arun Kumar Swankar sir, Sri Vipin Kumar sir from Goa Mines, Registrar sir, Dean, R.V. Sharma sir, and Tyagi sir, all HODs, I think HOD from other departments, Vipin sir, and now all present invitees, guests, present all participants, delegates of the event, and my dear students, ladies and gentlemen. I consider it is a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed it as a memorable and successful inaugural of workshop AMPTIC-2022. So before I'm talking about the 2022 MPTIC, मैं पास्ट के एक्सपीरियंस को कुछ शेयर करना चाहती हूँ. अभी बहुत अच्छे स्पीच उत्तम सर ने दिया है. मैं अपने इस वर्कशॉप के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ. जैसा कि हर जगह लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, इट्स सेकेंड नेशनल वर्कशॉप, और हमारा इसमें पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव जो था कि हम लोग एडवांसमेंट पे बात करें. मिनरल प्रोसेसिंग के एडवांसमेंट टेक्निक्स क्या है. जब हम लोग ये प्लान कर रहे थे जो हमारा फर्स्ट AMPTIC 2019 था, तो हम लोगों ने पहले ट्राई किया कि हम जो एंशियंट हमारे जो कोल एंड आयरन के जो इंडस्ट्री है उनके बारे में एक वर्कशॉप रखें, उसमें अवेयर करें जो भी नियर अबाउट जो भी झारखंड और जो अदर रिलेटेड उड़ीसा हो गया और जो रिलेटेड आपके सिटीज़ हैं, वहाँ से हम जो मेटलर्जी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कांटेक्ट करके ये बात पे करें. बट वर्कशॉप का हमारा मोटिव रहता है कि हम लोग हैंड्स ऑन भी करवाएं. टॉक तो है, आप जो उनका लिटरेचर पढ़ लेंगे, आपको उनके बारे में जानकारी हो जाएगा, बट वर्कशॉप का मोटिव होता है कि हैंड्स ऑन जो भी आप एक्सपेरिमेंट करके उस सब्जेक्ट को अच्छे से आप समझ लें. आप यहाँ से जाए तो आप उसको अपने हाथ से किए हुए है ये एक्सपीरियंस लेके जाए और आप उसको याद रखें. हमारा मोटिव यही था. तो हम लोगों ने AMPTIC 2019 में वो बहुत हद तक उसको अचीव भी किया है. मैं सर बताना चाहती हूँ कि 2019 में जो वर्कशॉप था हमारा 17 to 20 डेज़ का था. ठीक है सर. और उसमें हमारे अदर इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्री थे, वो अपने एग्जीबिशन था, तो वो 17 दिनों तक वो कंटिन्यू था. और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उस समय नियर अबाउट 100 पार्टिसिपेंट थे. वो डिप्लोमा कॉलेज के थे, डिग्री कॉलेज के थे, बीटेक के थे, मेटलर्जी इंडस्ट्री से थे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थे. उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट होते हुए देखा, क्योंकि वो पूरा एग्जीबिशन में आपके मिनरल ओर्स बन रहे हैं, उससे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रोबोटिक आप जो उसमें डेवलपमेंट है वो आप देख रहे हैं. वो इक्विपमेंट भी आई थिंक डायरेक्टर सर ने वहाँ पर जाके विजिट भी किया था. इट्स वेरी मतलब बहुत ही मुझे लगता है कि वहाँ पर नियर अबाउट 900 एंट्रीज हमारे थे. जितने भी नियर बाई स्कूल्स हैं, जितने भी मेटलर्जिकल रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, जितने कॉलेजेस हैं, वो उन्होंने इन्वॉल्वमेंट वहाँ दिखाया था. और सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हमारे जो हैंड्स ऑन था वो स्कूल के बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होके गए. सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो था वो स्कूल के बच्चे लोगों का था. वो एक टेक्निक्स को देख रहे थे, रोबोटिक जो आपका कॉल बेनिफिशिएशन में जो वर्क होता है वो फील कर रहे थे. बहुत एक्साइटमेंट, वो जो खुशी थी वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि वो बच्चे कितने एक्साइटेड थे. तो ये हमारा पॉजिटिव थिंकिंग था. जब मैं वो प्लान कर रही थी सर के साथ, तो मेरा ये कभी नहीं था कि इतना सक्सेस हो जाएगा 2019 में. बट 2020 में पेंडेमिक में बहुत कुछ चेंज हो गया. हम वो कंटिन्यू नहीं कर पाए. बट अभी जो है वो भी कोरोना का इफेक्ट तो अभी भी नहीं गया है, क्योंकि हमारा जो सेशन है
क्योंकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी आर एकेडमिशियन, तो हमारा एक सेशन चलता है। सेशन में हम लड़कियों के, बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हमको शेड्यूल देखना पड़ता है, एग्ज़ाम्स देखना पड़ता है, उनके लेक्चर्स देखने पड़ते हैं। तो हम वो एग्जीबिशन प्लान नहीं कर पाए जो MPTIC 2022 में हम लोग करना चाहते थे, राइट। तो ये हम लोगों ने जो हैंड्स ऑन है वो अपने डिपार्टमेंट, और उसका एक अल्टरनेटिव हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम जो हमारे नियर बाय, क्योंकि आप जानते हो जमशेदपुर में इंडस्ट्री, लेबोरेटरी, मेटलर्जिकल बेस्ड आपको बहुत सारे चीज़ मिलेंगे, हम वो आपको दिखाएंगे। जो मैं सर बताना चाहती हूँ कि हमारे प्लान में कोल एंड आयरन दोनों को 50-50 वेटेज दिया गया है कि हम दोनों को सिखा के भेजें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमारा NML में लेबोरेटरी है उसको हम लोग पूरा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर पूरा कोल एंड आयरन का जो भी पार्ट है वहाँ कवर अप कर रहे हैं। एंड नरवा माइंस, वहाँ पर माइंस को ले जाके दिखा रहे हैं। तो आई थिंक जितने भी डिप्लोमा के बच्चे, डिग्री के बच्चे आए हैं वो एक्साइटेड होंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको शेड्यूल मिल गया है। तो हम लोग प्लान वैसे ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हाफ में हमारा लेक्चर चलेगा, सेकेंड हाफ में एक दिन ऐसे अल्टरनेट डे रखे हैं। तो ये प्लान हम आपको डिटेल में आफ्टर सेशन में बता दूंगी। सो आप लोग जो भी पार्टिसिपेंट, क्योंकि सर मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे कैंडिडेट है वो नियर अबाउट जितने डिप्लोमा कॉलेज के भी है, जो हमारे लिए बेस्ट है कि हम उनको डिप्लोमा, UG लेवल, PG लेवल सभी रजिस्टर्ड किए हैं। और जो हमारा पैकेज है, जो हम कंटेंट फिक्स किए हैं कोल और आयरन के लिए, वो मेरे हिसाब से हम लोगों के MPTIC 2022 वाले ग्रुप के लिए जो शेड्यूल है हमारे, हमने बेस्ट करने का कोशिश किया है। होप आप लोग एंजॉय करेंगे। तो मैं अभी MPTIC 2020 के जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसको भी थैंक्स बोलना चाहूँगी। सबसे पहले डायरेक्टर सर को थैंक्स बोलना चाहूँगी, अपने पैट्रन सर को, उन्होंने हमें अलाउ किया इस इवेंट्स को करने के लिए, ठीक है। जितने भी हमारे जो स्पॉन्सर है, मैं स्पॉन्सर्स का नाम लेना चाहती हूँ। हमारे जिंदल स्टील एंड पावर, रुंगटा ग्रुप्स है, AZ इंटरप्राइजेस, सीडफीड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने बहुत ही फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस्ड वर्कशॉप था। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा रहा है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है फाइनेंशियली इस वर्कशॉप को करने के लिए। मैं RV शर्मा सर को, उनके मोटिवेशन रिसर्च ग्रुप को, सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो एकेडमिक में जो हमारे कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर त्यागी सर भी बैठे हुए, वो हमें सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री के तरफ से हैं। और जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहती हूँ। और हमारे टीम मेंबर्स, स्पेशली PR मिश्रा जो हैं, जो PhD कैंडिडेट हैं, सुरुचि हैं, बहुत सारे BTech के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कमेटी मेंबर हैं, मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। और होप एंजॉय करें आप, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो इसको, इस वर्कशॉप से कुछ सीख के जाए, यही मेरी आशा है। तो थैंक यू सर। अभी नेशनल एंथम के लिए हम लोग उठेंगे। आज जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
है, चाय है बाहर में और हाई टी है, सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको लेकर के जाएंगे। जो भी बीटेक स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ थोड़ा वेट करें, पहले गेस्ट को आने दीजिए। आप बैक डोर से वेट करिए थोड़ा, ओके। पहले हमारे गेस्ट को फ्रंट में आने दीजिए एंड देन फिर स्टूडेंट ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। There is a practical session by Dr. Anushri Datta ma'am and Dr. Vinay Kumar and Dr. Jichil Manji sir from Metallurgical and Materials Engineering Department itself in NIT's lab. So we will invite you all to be there. Thank you. Sir, 11:32. 12 o'clock? 12 o'clock. My God. Hello. There is a short notice for everyone. There is an expert session by Dr. Bipin Kumar Greaser, CGM, Goa Ore Mines, SAIL, and Sri Arun Kumar Swarnakar, sir, General Manager, Mahanandi Coal Limited, Jamshedpur. So we all invite you there. So please be on time at 12:15. So like we have to assemble here itself. So be on time 12:15. Thank you. ये 12:15 पे है सोनाटो सर का स्पीच है, लाइक वो पूरा समझाएंगे प्रेजेंटेशन। तीन से पाँच सर को खुद से करना पूछ लेते हैं।
Good afternoon, everyone. I now welcome you after the break. Now, we'll have an expert session by Sri Bipin Kumar Sir, Chief General Manager, Goa Ore Mines Steel Authority of India Limited, and Sri Arun Kumar Swarnakar Sir, General Manager, Mahanadi Coal Limited, Odisha. We welcome you, sir. Good afternoon. This session is all about the iron ore mining beneficiation practices and what are the emerging possibilities. My request will be that I want to make this session interactive. The more you ask questions, this session is going to be more fruitful for you also and at the same time for me also. It's not that only you want to learn. Actually, I also want to learn from your experiences. When we passed out from college, it's about 30 years. Exactly 30 years back, I passed out from the School of Mines, Dhanbad, in 1992 and joined SAIL and is still continuing with this. So, do you promise me that it will be an interactive session? आप लोग बैठ जाओ. Please. You know, I'll start with some facts and figures, and in between that, I will share my experience also. You know, India has 28 to 30 billion tons of iron ore reserve. You must be knowing that India is the 5th mineral-rich company in the world. But sadly, the mining 3 to 4% of our mineral resources on which we are working now. So it's a big area to be explored. You know, India, many invaders in the past invaded India only to take its rich mineral resources and other. You know, when I went to Nainital in an outbound exercise, I was surprised to know that there is a railway station called Kath Godam. And the precious wood was from the forest. It was collected there, and from there it was shipped to Britain, Great Britain. So that is the legacy of our country. You are born in India. It's a virtue of your past n-1 birth, I will say, that nature has selected you to be the citizen of this country. Gentlemen, out of this 28 to 30 billion tons, 18 billion tons approximately is hematite. 10 to 12 billion tons is magnetite. And 70% of this deposit is low grade iron.
containing 55 to 58% of Fe content. When steel industry emerged in our country, earlier there was no sinter facilities. So what we used to do is the best quality of or lump, which contains higher percentage of Ap, was being charged in open hearth furnace. That was the process of making steel. When blast furnace concept came, subsequently sintering facility came because lot of lump was required. And what will do? The mining, the fines was becoming a environmental hazard. In Goa itself, around 35 million ton of fines is lying since last 60 years. So, on 30% of this deposit is only high grade. We call more than 60% Fe content, we call high grade. So, actually humans work on the theory of convenience, So long as the best quality ore was available, 60 plus ore was available, we went for selective mining. जहाँ जहाँ अच्छा है, अच्छे pockets हैं, उसको निकाल लीजिए. Other iron bearing minerals are goethite, kaolinite, limonite, BHQ, BHZ, and so on and so forth. But they are in traces. Only these are these minerals occur in prominence. I was discussing about selective mining. Selective mining, if you look at a broader perspective, that if your entire reserve is having 61% Fe content, if you have mined out 62 and 63%, say 30% of the entire reserve you have mined out due to selective mining, then what will happen? If you don't take help of technology, if you don't resort to beneficiation, if you don't upgrade your remaining iron ore, what will happen? You will not be able to feed your blast furnace with the desired quality of input. What will happen? You will unnecessarily spoil lot of energy in heating gang up to say 1700 degrees centigrade. It's a big loss of fossil fuel. It's not coming cheap. Coking coal, as on date, as a steel maker, our biggest worry now is the cost of coking coal, which has gone as high as $325 a ton. So, gentlemen, that is the essence, that is the compelling reasons why we should go for beneficiation, and we should stop selective mining. It is convenience for the mining engineers also, that wherever good quality ore is there, you take out and leave it. With the existing rate of production, and as per the National Steel Policy, by 2030 India has to produce 300 million tons of steel. Right now, the production capacity of iron ore is 360 million ton. Based on 2019-20 data, actually we have produced 246 million ton in 2019-20. So here also you see there is a gap of around 114 ton. We are not able to make capacity utilization. There are various regions. The government has declared, is going for auction of iron ore mine. And it is surprising that lot of agencies
who have taken mining lease in auction, after 2 years, they have again going for returning it back to the government. Because mining is not an easy, easy business. It requires lot of. It's a first of all, not much, but it's a, we'll say, the capital intensive industry. If you want your mining operations to be sustainable, you have to invest a lot on prospective and exploration. By 2030, India will require 490 million tons of iron ore for its steel and allied industries. So you can very well understand what is the potential in this area, mining and metallurgy. And I am talking only of steel industry. Other than that, so I personally do not believe that there is a scarcity of job or there is no placement, this thing, that thing. These are all negative talks. There is an ample opportunity. But only thing I will say to my young friends, there is a शेर that मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. Friends, my request to you is, you should work hard. You know, ships look very good in the shore, but they are not. That's not they are meant for. Ships are meant for encountering the turbulence tide in the ocean. So that's it. That should be your conviction. You have got enormous energy. The need of the hour is to focus that. And no field is good, no field is bad. People think that, yes, the computer engineer, these are all myths, I am telling you. These are myths. How many of you have done that experiment with the sun, with the looking glass? You have done that? Huh? When you focus, in our childhood we used to do that. We used to focus it, and behind that we used to keep a paper. And soon the paper was start burning. So that's the power of focus. You must focus your energy, and you will find, have a plan for your self-development every day. And for you, sky is the limit. Only God knows where you can reach. So there are certain challenges also. I'll coming. High-grade iron ore is depleting fast due to our, I have told you earlier, selective mining. And the time will come. Today, every day there is a tug of war between me and my blast furnace counterpart. They say you are giving me high silica, high alumina ore. I say you have not invested in mines. What will do? You cannot change. See, it's a kind of disease. If there is a pimple, if you treat it, the cost is very less. थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, थोड़ा सा हरी सब्जियां खानी पड़ेंगी, and it will get corrected. But if you are negligent about your health and something went seriously wrong with your stomach or any vital organ, what will happen? It may require hospitalization. So that is a state of hospitalization which is coming for mining fraternity. And
everybody wants, there is a very bad trend in industry that everybody wants to pass time. अरे यार 3 साल है, हमारी नौकरी 3 साल है यार, 3 साल में तो अरे कर लो ना यार, कॉस्ट कंट्रोल कर देना है. That I differ from that perspective. For short-term gain, you are compromising with your long-term sustainability. That's not the business. So the idea is that we should try for sustainable mining. CLO, calibrated lump ore, it's the hot cake for blast furnace. No, blast furnace people will always like to have that. And with mine going deeper and deeper, this CLO, which was in 30-70 ratio, has come down now to 20-80. So huge amount of fines is getting is stockpiled in all mine pit. So intelligent brain like you only came out with the technology of pellet making. So today the fines is being utilized. But between that, those fines to be utilized to be converted as pellet, you need to understand the beneficiation process. Because with 61, in all other countries, European countries and other developed countries, the pellet percentage of iron content in pellet is 65%. But here in India, we are happy with 61.5. So what will happen? The 3.5% of the entire burden of the blast furnace, you are again unnecessarily heating it to up to 1800 degrees centigrade. And again cooling down and throwing it as a gang. That is the cost. If you are not beneficiating, if you are not beneficiating the ore. In order to see that the mining 2019, lot of mines were suspended on account of some or other violations. So government did given some relaxation through MMDR Act 1957 and allowed us to sell fines because there was a crisis. But that time, you see, the lot of factors work in industrial functions. We didn't get the permission from Jharkhand government to sell our extract fines in the open market. So the crux of the thing, I think you are all convinced with this point, the iron ore beneficiation is the need of the hour for sustainable growth in our country. Are you convinced or any question till now? Please open up. Please open up, then the discussion will be very, very fruitful. See, now I want to just give you a glimpse of, yes please, question. Four 90 tons of iron ore. 300 million tons. Uh, 490. Actually, I got your point. Actually, very good question. Actually, for 1 ton of hot metal, we require very economically, even if your blast furnace is operating at a very good productivity, then for 1 ton of hot metal, we require 1.6 ton of raw material, iron ore. That is why for producing 300 tons of steel, 300 ton into do 1.6, so that's a 490 million ton of iron ore which will be required. Am I clear? And that 360 and 246. So as per the IBM plan, India was well poised to produce 360 million ton of steel in 2019-20, but it could not produce that much. It could produce only
246 million ton. Because, see, if I'm getting lease today, that's why I'm coming to this point, acquiring a mining lease. The mining lease, for getting a mining lease, lot of government formalities there. First of all, like, you will have to go for prospecting and mineral exploration. So mining lease, you will collect a data. You will not go and invest, ki bhai, I'll get that lease. You will have to go to IBM. From IBM, from our geological map, you will know ki where is the deposit, what is the type of deposit, how much reserve I will get. Then you will go for acquiring a mining lease. After acquiring mining lease, there are so many conditions the government imposes on that. After that, you will have to go for prospecting and mineral exploration. This prospecting and exploration is of 4, G1, G2, G3 and G4. So generally what is expected is G4, G1 level, that is you will have to go for core drilling into 100 meter by 100 meter grid. So your entire deposit. And the cost of core drilling is, if one core drilling you are going for, it costs around 7 to 8 lakhs rupees. And then the core, you will have to go for testing of it. And testing, then you will know, you will have to make either in Sarpak or data mine. Either Sarpak or data mine. In these two applications, you will have to put those datas to know your ore body. How much ore is there, what is the quality of ore, and then you plan for locating a plant, where you should locate the plant. Means hopper, where the material will come and being fed. Ideally, from geology point of view, or from mining point of view, your hopper where you will put the material after hauling should lie at the center of gravity of the ore body. Then only in the long run or throughout the life of the mines, you will remain economical. Fuel, you will have fuel efficiency. What mistake at Goa mines was done 100 years back, we are now suffering. There is slight mistake in geological map or geological reading of the geological map. Our crushing plant is located at the highest point. Not at the highest point, but not at the center of gravity of the ore deposit. That is why our maximum hauling, the dumper, 100-ton dumper is plying against gravity. Loaded dumper plies up gradient. So the lot of fuel is required. So that is the essence. When mine planning is being done, lot of good brains to be put there, lot of mind has to be, lot of energy has to be put there. Otherwise, once you do that mistake, it cannot be corrected unless and until you go for a separate parallel plant. My point here is that you should be very cautious, and a lot of micro analysis has to be done, which is lacking in our country. We spend very less on exploratory drilling, all the companies. One of the reason of that is the process for exploration is also very complicated. All the mining belts are lying in forest area. Deep, dense forest area. So there the Ministry of Environment and Climate Control, they always put restriction. They will not allow you to cut trees. So machines and other resources are to be taken. For that you have to make a road. So those permissions are very complicated, very time taking. So mine planning approval from IBM,
And there are so many agencies. You cannot start mines just like that. You'll have to take, after prospecting a mineral exploration, you will have to make a mine plan. Mine plan constitutes of many informations. How many people are going to be engaged? What are the machineries will be using? What will be the annual production? How we are going to produce that? How that produced we are going to be processed? What will be the destination of the material? Where you will take, whether it will be for captive purpose or for open market selling. If it is open market selling, the royalty will be different. So after doing all these things, then you will have to take from State Pollution Control Board. MOUFCC will grant you the lease, mining lease, but further permission you have to take from State Pollution Control Board. Then Director General of Mine Safety, how you are operating in a mine, what will be the bench formation, what will be the height of the bench, what will be the width of the bench, what will be the height of the bun, what are the precautions to be taken in the processing plant, what are the other facilities for your staff, for ladies. So there are so many procedures. After fulfilling all those criteria, you can start mining. So development of mines, processing plant and other statutory and allied facilities I told you. The other activities in mining is drilling, blasting, benching, excavation, hauling, crushing, screening, conveying, loading. I think you are all aware with all this terminology, isn't it? Do you have anything to ask from this? I am roughly telling you because iron ore is a very hard deposit. It is found in the Deccan regions of our country, and it's a igneous rock. At the time the Gondwana period. So first of all, we do generally in the small, if you leave aside a small mining, though generally 6-inch drill we are doing. 6-inch down the hole drill up to 10 meters. And if required, we can go for more also. 10-meter drilling we do. After that, we go for blasting it. Blasting, we use slurry explosive. So after blasting, we haul bigger capacity excavators and dumpers, 100-ton dumpers. We take this material to hopper, processing plant. In processing plant, the entire ore is crushed into sizes. Generally, two stage or 3 stage or 4 stage crushing is done. 2 stage crushing, in first stage crushing is called primary crusher, in which generally jaw crusher or gyratory crushers are utilized. And cone crusher is generally used for secondary stage crushing. Tertiary also is hybrid gyratory and cone mix type of for tertiary, and quaternary crushing is gyra disc. This type of disc type crusher is utilized. This thing we do is generally the fines is the entire ore is converted into lump and fines. Lump generally we categorize anything plus 10 mm size, and minus 40 mm size is considered as lump, and minus 10 is considered as fines. Apart from this, Mother Earth changes every 5 to 6 meters. Every 5 to 6 meters, 7 meters, the characteristic of ore material changes. Even in best quality of ore, also we encounter overburden, interburden. So these are the material which are not desirable. So we put it separately. We load it, and we don't put it in the processes plant. We put it in the waste dump. So waste dump management is another area in iron ore mining, because these are generally open cast mines. Iron ore generally is open cast mining is done.
So here, management of overburden is also a very big task. Then IBM, after winning the iron ore, winning the ore, you have to return the land to the government. After beautifying it, if we had created some dip, then you have to return it in the form of lake. Like that, we have in SAIL, we have returned after mine closure in our Purnapani mines. It has become a beautiful lake. You can go and spend some time there. You will not find that, you will not find the difference whether at some point of time there was such a big mines in this area. You will not be able to know it. So that is the complete year of mining process. After mining, winning the ore, I have to return the land to the government. And I am telling you, while what is called land handover, when the government gives hands over to land to us, it is not free. Suppose 1 hectare land I want for mining, then I will have to take 2 hectare of land somewhere in that area, and I will have to pay for 2 hectare land, and for plantation of that land I have to pay, for maintenance of that land, those trees, maintenance of those trees for 10 years. The government fix up a charge, and we have to pay that charge. Then only the government will give land to us. So these are the different steps. Overburden, interburden. Overburden is what, suppose in the mine I know that after removing this much soil, I will reach the ore body. So that is called overburden. Now interburden, suppose I have started a bench mining, and in between some bad material comes. So I cannot fit it to the plant. So I have to excavate it and put it in the waste dump. So that we call interburden. So now, why now? Just I have briefly discussed it, but I will go point by point. That role of iron ore in steel making. See, 1% increase in Fe content in the burden to the blast furnace increases blast furnace productivity by 2% and reduces coke rate by 1.8%. So that is the essence of beneficiation. Impact of alumina. If 1% alumina is decreased in iron ore, it increases blast furnace productivity by 3 to 5%. Alumina, makes the slag viscous, increases the viscosity, and slag will not come out of the blast furnace. Decreases coke rate by 6 to 8 kg per ton of hot metal. Decreases in flux rate by 25 to 30 kg per ton of hot metal. Decreases in the slag rate by 25 to 30 kg per ton of hot metal, and decrease the nut coke consumption by 3 to 4 kg per ton of hot metal. It's a huge advantage if I am giving a better quality of ore to my blast furnace, then my blast furnace productivity and ultimately the profitability is going to be enhanced. So that is why iron ore beneficiation, why? An imperative, why I am telling you it imperative is, if we go for beneficiation, then it can enable us to use low grade iron ore. It will increase reserve, resource,
life of the mines, and will make mining operation easier. You know, now the guideline of IBM has come that anything plus 45% Fe content is a subgrade ore. I cannot declare it waste and throw it. I cannot do that. So I have to maintain another set of stockpile where I will keep material from 55 to 45, 45 to 55. So could you understand? It is again rehandling. Once I am putting it, again I have to excavate it, take it for some processing. So there is a rehandling. It will reduce rehandling of ore and other environmental issues associated. See, once I have, 33 million ton, Goa mines, 33 million ton of iron ore is there for last 60 years. What is happening? Every monsoon, the fines gets, run away. With run of water, the fines comes to the lower portion, and ultimately it tries to go to the river. So the environment department says, why you immediately dispose it off. So what we have to do, entire material I have to again desilt it and strengthen the boundary. Every year we have to make boulder wall so that the only clear water goes in the river and these things gets arrested there itself. So its management of the dump is also a very big task, and year after year we have to invest in that. It will improve energy balance and reduce carbon footprint, improve techno-economics of steel making, along with the quality of steel. In India, I've at times pained, मुझे बहुत दुख होता है कि हम ऑटो ग्रेड स्टील नहीं बना पाते. JSW और कुछ टाटा ने भी अभी शुरू किया है, हम नहीं बना पाते हैं. हमारी स्टील, हमारे यहाँ से आयरन ओर, जापान टेक्स आयरन ओर फ्रॉम अस and they provide tool grade steel. Whatever you use in your machine shop, machine tools, none of them we manufacture in our country. All tool steel are imported from Japan. So it is in our hand, but we need to work on that. Ample fines will be available for pelletization. Now, lot of manufacturers are adding capacity to pellet plant. Where from so much fines will come? So it will make us available ample fines if you beneficiate it and use those fines, low grade fines for pellet making. Will be more environment, mining and steel making will be more environment friendly and sustainable. So now I am coming up to few practices of iron ore beneficiation which are being practiced in industry. Simple, I start with simple washing. Actually, Goa, how many of you have gone Goa and seen the Chinese model of washing the ore? Goa, the lot of water is available. What they are doing, they are putting the ore inside a tank and wooden, rotary, some rotary arrangement has been done with the help of PA, and they are removing the surface gang. Surface gang, that itself is reducing the gang by 1.5%, 1.5 to 2%. So that's called washing. In Bolani ore mines, we had a washing circuit in which we had a scrubber, classifier, dewaterizer,
and thickener. A scrubber is used for slightly improving the quality of lump ore. What we do, we call it drum scrubber. In a scrubber, we feed the lump ore and then water, and we rotate it through different blades inside the. So inside the cascading and cataracting. Due to cascading and cataracting operations, the surface gangue from lump is removed, and 1 to 1.5% upgradation we have seen in Fe content, 1%, and alumina and silica separation is taking place to some extent. Next comes the gravity. There are two basic way of beneficiation. One is gravity separation, another is magnetic separation. Gravity separation, generally we go for hematite ore, which is more prevalent in our country. I told you around 18 billion tons of hematite ore is there. We have. So classifier, jigs, hydrocyclones, heavy media separation, spirals. These are different equipments through which are being utilized. In jigs, there are two types of jig, bomb jig and buttock jig. Nowadays, things are, even ferrosilicon is being utilized. Ferrosilicon is being utilized for, as dense media separation, heavy media separation, for low grade also. By the way, how many of you have seen these equipments? If you go to NML, you can see the jig, you can see classifier. Or if you can come go to Sarda mines, I'll request प्रसाद साहब, बच्चों को थोड़ा सा जो उस माइन ले जाइए, वहाँ पे अभी तो माइन नहीं चल रही है, लेकिन वो उसका है, it will. हाँ, ग्राइंडिंग, हाँ, राइट, क्योंकि देखिए इस तरह के सेशंस का तो फायदा है आपको, लेकिन कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग. If you see it, you will believe it. So another area is magnetic separation. Here you see the Fe is attracted to magnet. So for pellet grade fines, what we do, if we are not able to beneficiate it further, we go for grinding in ball mill and rod mill. And we grind it. After grinding, the Fe component, the entire ore is ground into 115 micron. Then we pass it through LIMS, HIMS, WIMS and HGMS. Low intensity, high intensity, wet high intensity magnetic separation and high gradient magnetic separation. Through that, even we go for beneficiation of hematite also. Because ultimately we ground it, when we ground it to 150 micron, the size becomes magnetically attracted towards magnetic. It becomes suitable for magnetic separation. Then is a flotation, filtration through high pressure filter. Because the nowadays water availability is also is a problem. So this concept has come where zero discharge. Concept of zero discharge has come. Next major challenges I am telling you in this beneficiation, or you say iron ore mining, you can say. Stringent environmental laws, I told you. Mines are situated in the forest where the government wants that reserve forest should be conserved. Water availability in the river, availability of power and fuel, slime and tailing management. That's why now the concept has come from that let us make use of tailing in making brick. NALCO is trying, even we are trying, and thanks to Mr. Nitin Gadkari, our Minister for Road and Transport, he is using fly ash for making road.
impact on forest habitats, flora and fauna, impact on river and other water bodies, logistic integration. Now the time has come, pneumatic transportation, rail, road, water, and the fourth was pipeline, slurry pipeline transportation through slurry pipeline. Now the concept has got pneumatic transportation. And availability of competent human capital. Nobody wants to work in mines. So that's another challenge. I'll request young friends to break those barriers. Stakeholders, local issues, CSR, etc. What are the possibilities ahead? And here I would like to draw the attention of all these young and brilliant minds. Use of iron ore rejects in road or brick making. Come out with some technology, come out with some research work which will enable us to make the West best from the West. Our Prime Minister says, technology process development to bring down Fe content in slime below 45%. Even after the testing in all the world-class laboratories, the material Goa ore mines, after pilot test testing, we have given the task to NMDC to design the flowchart. We are not able to bring down the Fe content in tailings below 45%. So that is creating a problem that even the tailing I cannot throw it. The tailing will become a subgrade ore. Investment in R&D for new innovations in iron ore beneficiation. We should invest a lot in research and development, because they will be the pathfinders for future. Possibility of bio-leaching in commercial scale. This iron extraction is possible through bio-leaching also, but that is only on the experimental stage. We must try for bringing it commercialization. Development of new technology like dry beneficiation at commercial scale, which we are trying with the help of NML Jamshedpur. We have sent fines from Goa, and we are trying that. Extraction of iron ore from BHQ. Prasad Saab ka pet project hai. We will render all help. And last, friends, don't be cruel. Let us preserve fuel. Provide solution without pollution. When we conserve nature, we conserve life. Nature's future depends on us. When the resources are conserved, our chances to live on this earth, Mother Earth, increases. Never let our greed compromise with the grain. With this, I conclude my deliberations. If any question, you are free to ask. Otherwise, pardon? Actually, LIMS is low intensity magnetic separation, where the magnetic is below 2000 Gauss. Medium intensity 2000 to 10,000. High intensity is 10,000 to 15,000. Very high is beyond 2000, beyond 20,000 Gauss. Here we increase the magnetic field. We increase the magnetic force, which will tap iron particle, and will separate it. It's a type of magnetic separation. और मैं अपने yes please.
Right. Right. Thank you. You know, biogas. Biogas. Dr. Saab was telling me we have purchased 2 units where the domestic waste will generate biogas. You can make tea and coffee. You know, our transport minister Sri Nitin Gadkari is doing for ethanol. Ethanol will be used as fuel. Even sugar cane, from sugar cane we will hear. And now the things are coming hydrogen. Make use of hydrogen for future coming for energy as energy source. And moreover, sun is our father, we worship. So solar energy is going to decide our tomorrow. So the sooner the better. With this, I will end with 2 lines. सफर की हद है जहां तक कि पैरों के निशार हैं. Particularly for our young friends. सफर की हद है जहां तक कि पैरों के निशार हैं. चले चलो कि जहां तक ये आसमां है. और ये क्या कि उठाए कदम और आ गई मंजिल. ये क्या कि उठाए कदम और आ गई मंजिल. बात तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे. With this, I once again urge you for hard work and focused work. Thank you very much for patient listening. Thank you, Bipin sir, for the valuable information which you shared with us. Now I would like to invite Shri Arun Kumar Swarnakar sir to give his views on the topic, sir. Thank you, sir. Yes. Advanced medium coal mining. This is your. From this it will change. Forward and backward. Very good afternoon again. नमस्कार आप सबों को. शायद आप सब अब कुछ थकान से महसूस तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक नया चैप्टर कोयला से संबंधित चालू होने जा रहा है. कोयला के बारे में तो जानते होंगे आप सभी. क्या है कोयला? नहीं, फ्यूल तो है ही. कोयला एक सुनने में थोड़ा सा गड़बड़ कुछ लगता होगा, है ना, काला काला. लेकिन हम सभी यहाँ ग्लोरियस हैं. काले में भी ग्लोरी है, चमक है, चमत्कार है उसमें. उसको अभी हम लोग केवल कोयला ही नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको डायमंड भी अब बोलने लग गए हैं. बिकॉज मैं अभी प्राइमरी सेशन में भी आपको थोड़ी सी झलक दी थी कि कोयला इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी टुडे इटसेल्फ. आज भी इंडिया का प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है. कोयला के बारे में आप सबों को एक आइडिया हो, क्योंकि आप कोल बेल्ट और आसपास के इलाके से सब हैं मौजूद. इंडस्ट्री में भी वहाँ ज़रूरत है. और ये जो चमक दिख रही, इसलिए मैंने बोला कि कोयला में ये चमक भी है, चमत्कार भी है. और ये जो चमत्कार हम सब डेली देख रहे हैं, उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है. तो मैं थोड़ी सी आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा. कुछ ग्लिम्सेज मैं बताऊंगा जो आप कोल और कोल इंडिया के बारे में क्या धारणा रखते हैं. कोल इंडिया
जो कोयला का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग कंपनी है, हमने बोला कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल कंपनी है, सिंगल लार्जेस्ट कोल कंपनी। तो इसके बारे में कुछ झांकी जानना जरूरी है आप लोगों को। इसमें एडवांसमेंट इन कोल माइनिंग टेक्नोलॉजी, बिकॉज इट इज ए चैप्टर ऑफ टुडेज मिनरल प्रोसेसिंग, तो ये जानना जरूरी है आप सबों को कि हम लोग आज कोयला जो आज से 30, 40, 50 साल पहले कंसेप्ट हुआ करता था, कोल फील्ड के बारे में कंसेप्ट हुआ करता था कि बड़ा डस्टी होता है, बड़ा स्मोकी होता है और बड़ा खतरनाक भी होता है, लेकिन अभी थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट एंड इंडस्ट्री इज अकॉर्डिंगली एक्सेप्टिंग इट। तो अभी आप देखेंगे जो भी हमारे इंटरप्राइजेज हैं वो कोयले की ओर ज़्यादा झांक रहे हैं। झांकने का रीज़न ये है कि उनको अपना कुछ भी, अभी गिरी साहब को कुछ भी बनाना होगा तो कोयला के बगैर वो कुछ है नहीं, अधूरे हैं। तो उनकी पूर्णता के लिए कोयला होना ज़रूरी है। स्टील चाहे जितना भी फाइन हो, लेकिन कोयले की जो ये कालापन है, जितना काला होगा उतना ही अच्छा होगा। तो वो कालापन खोजने की हम लोग की भी एक रहती है कि अधिक से अधिक काला कोयला कहाँ से निकाला जाए। चमकदार कोयला निकालेंगे तो इनको ऑब्जेक्शन हो जाएगा इंडस्ट्री वालों को, क्योंकि उनका स्लैग बढ़ जाएगा और ऐस बढ़ जाएगा। अभी प्री सेशन में भी आप टाटा से जो आए थे उन्होंने देखा, लेकिन हाँ देयर इज ए स्कोप, अभी बहुत स्कोप है उसमें, और हम सबों को न्यू थॉट्स के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जो एनर्जेटिक और मैं बोला कि टैलेंटेड बच्चे जो हैं, देश के निर्माण के जो उनके कंधे में जोर आने वाला है, उन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों कि ये आपको एक ग्लिम्स दिखलाऊंगा मैं, और दिस इज द ग्लिम्सेज ऑफ कोल एंड कोल इंडिया लिमिटेड। जैसा कि आपको हम बताया कि इट इज़ द चिपेस्ट फॉसिल फ्यूल, सॉलिड फ्यूल है और एबंडेंटली अवेलेबल इन इंडिया है। अभी इसकी मात्रा और एसेस होना बाकी है। जहाँ तक मेरी जानकारी थी, हमने आपको बताया कि अगले 300 वर्ष का भी रिजर्व यहाँ मौजूद है। तो ये काफ़ी है, और अभी भी इसमें और ये एक्सप्लोरेशन चल रहा है। बहुत सारा बेल्ट, जिस बेल्ट से मैं आता हूँ, इंडिया का करीब करीब 30% कोल रिजर्व्स रखता है उड़ीसा। आपका ये कोल इंडिया करीब करीब 8 स्टेट्स में फैला हुआ है और 8 सब्सिडरी द्वारा संचालित है। मैं जिस इससे आया हूँ, महानदी कोल फील्ड कहलाता है, और महानदी कोल फील्ड इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कोल कंपनी इन कोल इंडिया। लास्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन जैसे 662 मिलियन टन कोल इंडिया किया था, उसमें से 138 मिलियन का हमारा कंट्रीब्यूशन है एमसीएल का। तो मैं एमसीएल के बारे में भी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कोल इंडिया की बताऊंगा। कोल इंडिया की झांकी है आपकी कि यहाँ करीब करीब 318 माइंस वर्किंग है और 141 उसमें अंडरग्राउंड है। 158 ओपन कास्ट, लार्ज ओपन कास्ट मेगा प्रोजेक्ट से हैं। उस हमारा टोटल कोल का प्रोडक्शन का 90% ओपन कास्ट से आता है, और अभी धीरे धीरे अंडरग्राउंड का हमारी जो है प्रोडक्शन लेवल कम है, क्योंकि आप जानते हैं वो ह्यूमन इंटेंसिव होता है, और ह्यूमन इंटेंसिव यानी अनसेफ वही होता है। तो बहुत सारे हम जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात बोलेंगे, एडवांसमेंट में है। तो ये अंडरग्राउंड में भी एडवांसमेंट किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर अभी भी उसका बहुत हम लोग को ये नहीं दिख रहा है कि बहुत तेज़ी से हमारे डिमांड को पूरा कर पाएगा। चाइना बेशक अंडरग्राउंड में भी काफ़ी आगे है, और हमारा कंपटीटर अभी चाइना ही रह गया है। अगले इसी वर्ष के बाद चाइना ही कंपटीटर रहेगा वर्ल्ड में, दूसरा कोई और नहीं रहेगा। तो हम आपको यहाँ बताने जाएंगे कि नेक्स्ट स्लाइड जो है, हम ये बता रहे हैं आपको, इस साल हमारा 700 मिलियन टन प्रोड्यूस करने का है। देश का डिमांड 1 बिलियन टन का है, लेकिन हमें अभी डिपेंडेंट होना पड़ रहा है सम एक्सपोर्ट कोल, और पर्टिकुलरली फॉर द
कोकिंग कोल। कोकिंग कोल हमारे पास कम है, उसका रिजर्व झरिया और ईस्टर्न कोल फील्ड में ही केवल है, रानीगंज में थोड़ा है। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए हमें कोल विदेश, हमारी अभी कोल इंडिया की बहुत सारी कंपनियां को विदेश में भी ली गई है और वहाँ से हम लोग कोकिंग कोल का सप्लाई इंडिया को करेंगे और करेंगे। अभी चालू होने जा रहा है, जिसमें पिछले बार भी आपको शायद आप न्यूज़ के थ्रू भी जानते होंगे कि यूएसएसआर में भी हम लोग साइबेरियन एरिया में बहुत बड़ा कोकिंग कोल फील्ड को हम लोग एक्वायर किए हैं कोल इंडिया ने, और वहाँ से अभी हम लोग का एक्सप्लोरेशन चालू हो रहा है। जो कोकिंग कोल आपको आएगा और जब वो आना चालू होगा तो अभी जो इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा हो रहा है कोकिंग कोल में थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, कम होगा। ये अंडरग्राउंड के बारे में हमने बताया कि हमारा केवल 10% कोयला आता है, जिसके कारण बहुत सारे हैं, ह्यूमन इंटेंसिव है, अनसेफ है और उसमें लो प्रोडक्टिव होता है। इसलिए उसको उसमें फिर भी उसमें एडवांसमेंट में हम लोग कई टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। जैसे हुआ कंटिन्यूअस माइनर, जिसमें कि मैन की इन्वॉल्वमेंट कम होती है और मशीन ज़्यादा काम करता है। इसी तरह और अभी हम लोग का एक चल रहा है उसमें कि वहाँ पर ये जो मेन स्टीयरिंग जो ये पहले टब से सप्लाई होती थी, वो स्टीयर्ड व्हीकल से भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये सारी उसमें एडवांसमेंट होने से कुछ प्रोडक्शन वहाँ से बढ़ेगा। दूसरी चीज़ होती है कि माइन बहुत लंबे हो चुके हैं सभी अंडरग्राउंड माइन, तो वहाँ पर लोगों को आने जाने की बड़ी तकलीफ होती है। तो एक ही मेन राइडिंग जो है उसको अडॉप्ट किया गया है ताकि उनको कम से कम समय लगे और सेफली लोग काम के प्लेस तक टाइम पर पहुँचे और टाइम की सेविंग हो, वर्किंग टाइम ज़्यादा मिले। आपको सबसे ज़्यादा है कि आज अभी क्लाइमेट की बात हो रही थी कि क्लाइमेट चेंजेज और चैलेंजेज इन माइनिंग इंडस्ट्रीज क्या है। जैसे डस्ट क्या बोलते हैं, फ्यूम्स से आपका कैसे रोकथाम हो, इसके बारे में हम लोग बहुत सारे चीज़ें ले रहे हैं। अभी हम कोल इंडिया में आपको बताना जानकारी के लिए ज़रूरी है कि कोल इंडिया अभी ग्रीन एनर्जी के तौर पर अब जाना जाएगा बहुत जल्द। सॉलिड फ्यूल जो निकल रहा है, बाकी मैक्सिमम कोल अभी हम लोग अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन से निकालने जाएंगे। गैसिफिकेशन मीन्स हम कोयला अंदर में ही जलाएंगे, आपको उसकी एनर्जी देंगे, एनर्जी गैस एनर्जी के तौर पर आएगा और उससे ही टरबाइन चलेगा और ये हमारा ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो थर्मल बेस्ड जो पावर हमारा जनरेशन का सॉलिड फ्यूल का एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, उसको धीरे धीरे इसको कम करना है और उसमें काफ़ी स्कोप है। तो इसके साथ आप अभी ये ग्रीन के बारे में आपको और बताना जरूरी है कि अभी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स में इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत आवश्यक हो गया है। आजकल MOEF CC जो है बिना आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो स्टेप्स हैं उसको कंप्लाई किए बगैर आपको परमिशन नहीं देता है माइन को ऑपरेट करने का। तो उसके लिए कोल इंडिया बहुत एग्रेसिवली इसमें वर्क कर रहा है और एवरी ईयर, लास्ट ईयर का जो डाटा है करीब 30 लाख सैपलिंग्स प्लांटेशन हम लोग कर रहे हैं। जो हम लोग फॉरेस्ट एरिया को कट करते हैं या फॉरेस्ट को डैमेज करते हैं तो इक्विवेलेंट उसको 3 टाइम्स और 2 टाइम्स उसको हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं और ये प्रगति काफ़ी अच्छी हो रही है। वाटर बॉडीज का भी हम लोग संरक्षण कर रहे हैं, अभी काफ़ी इको ये सिस्टम्स को डेवलप किया जा रहा है। आप इसी संदर्भ में देखेंगे हम लोग जीरो एनर्जी, नेट एनर्जी, अभी जैसे सेशन के पहले हम लोग की बात हो रही थी जीरो एनर्जी, एग्जैक्टली वी आर गोइंग फॉर नेट जीरो एनर्जी कंजम्पशन।
मतलब ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी जीरो हो जाएगा। हम लोग जो थर्मल पावर से एनर्जी ले रहे हैं उसको हम लोग अभी जो नन फॉसिल पावर सिस्टम से हैं, जैसे कि बताए गिरी जी ने हमारे कि अभी क्या सूरज हमारे पिता हैं, निश्चित सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी सोलर एनर्जी पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। हमारे पास काफ़ी रिक्लेम एंड बैकफील्ड एरियाज होते हैं, वहाँ इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। वहाँ हम लोग अभी सोलर पावर प्लांट्स बहुत ह्यूजली लगाने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वहाँ से जितनी एनर्जी हम जनरेट करेंगे और जितना एनर्जी मुझे अपना इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरत होता है, जिसमें कि जैसे डंपर्स चलाना है या हमारे सॉवेल्स चलाने हैं प्रोडक्शन के लिए, या हमारा प्रोसेसिंग यूनिट्स चलाना है, ट्रांसपोर्ट करना ये क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, साइलोज के लिए, ये सारे चीज़ के लिए जो हमारा पावर कंजम्पशन होने जा रहा है उसको हम लोग सीधे सीधे जो सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे उससे कंपनसेट करेंगे। सो इट इज़ आवर मिशन एंड विजन आल्सो, एंड वी आर गोइंग टू मीट इट वेरी सून। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अभी आपको हमने बताया कि इसी तरह हमने माइन लाइटिंग जो है, माइन लाइटिंग को मैक्सिमम हम लोग अब सोलर लाइट से ही उसको ये कर रहे हैं, यूज हो रहा है। और फ्यूचर में भी पूरी की पूरी माइन लाइट सोलर लाइट से ही हम लोग उसको ये करेंगे, कंपनसेट करेंगे। तो ये अभी उससे भी काफ़ी कोल का थर्मल पावर पर प्रेशर कम आएगा और वो इंडस्ट्रीज़ को आपको ग्रीन एनर्जी में ज़्यादा सहयोग देगा। अभी बहुत सारे इस फील्ड में, और आपको स्टिल ये लॉन्ग वे टू गो। ये कहने का मतलब है कि अभी भी हम लोगों को इसमें बहुत कुछ आगे और भी एडवांसमेंट की आवश्यकता है। जैसा आपने देखा कि डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन जो अभी हम लोग कर रहे हैं, आज ही हम 1 बिलियन टन आज के डेट में इंडिया को ज़रूरत होता है पर ईयर। और अभी मैक्सिमम पिछले साल कोल इंडिया एज वेल एज अदर कैप्टिव माइंस सभी को पकड़कर 772 मिलियन ही हम लोग जनरेट कर सके हैं, और करीब करीब 208 मिलियन टन कोयला आज के डेट में भी हमें बाहर से मंगाना पड़ा है। और मेक इन इंडिया के तहत अभी जो हम लोगों पर प्रेशर है कि हमारी एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करना है, और उसके लिए हम लोग कोल इंडिया पर ज़्यादा प्रेशर है। कोल इंडिया को इसीलिए 24-25 में 1 बिलियन स्वयं एज ए कारपोरेट यूज करना है, एंड 200 मिलियन के करीब करीब हमको अदर कैप्टिव माइन से लेना होगा, जो कैप्टिव पावर प्लांट्स कैप्टिव माइन से अभी ब्लॉक्स दिए जा रहे हैं उनसे करना होगा। क्योंकि आने वाले दिन में ये करीब 2030 तक एनर्जी कंजम्पशन इंडिया का नियर अबाउट करीब 150 से 1,500 से लेके 1,800 मिलियन टन की जरूरत होगी, 1.8 मिलियन। तो ये ह्यूज कोल प्रोडक्शन का जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस रिक्वायरमेंट को नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ। तो इसके लिए अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कोल माइनिंग में अडॉप्ट कर रहे हैं। खासकर कोल जनरेशन सरफेस माइनर से चालू हो चुका है, और नियर अबाउट 90% ऑफ कोल जनरेशन सरफेस माइनर से ही किया जा रहा है, जिसमें कि ब्लास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ब्लास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने से वहाँ फ्यूम्स का भी, नॉक्सियस फ्यूम्स का जो इन्वायरमेंट में मिश्रण होता है उसकी ज़रूरत नहीं होगी, कमी होगी, और कार्बन उत्सर्जन भी इससे कम होगा। जो हमारा CO2 का लोड है वो कम होगा। साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों को अभी ये दिया जा रहा है कि डस्ट जनरेशन होता है ट्रांसपोर्टेशन में, जहाँ ट्रक से ट्रांसपोर्ट है उसको रिड्यूस करना है। तो उसके लिए अभी
पाइप कन्वेयर से ट्रांसपोर्ट की हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन मतलब सिस्टम डेवलप करने के लिए पूरे एक मिशन में है। और ऑलमोस्ट MCL का हमारा खास करके और जो NCL हो या SECL के बड़े बहुत से बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट को पाइप कन्वेयर से जोड़ दिया गया है। वहाँ साइलो लोडिंग की जो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके तहत किया जा रहा है। लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग दोनों में हम लोग लिस्ट डस्ट जनरेशन मतलब हो ये हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके चलते ये सेफ माइन एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली माइनिंग अब होता जा रहा है। इसलिए कोयला का जो पहले कंसेप्ट था वो बिल्कुल अब चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इसलिए यंग गाइज जो कोयले के बारे में कोल इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के पहले जैसे हम लोग के टाइम में सोचते थे कि कोयला इंडस्ट्री में ज्वाइन करना आने की बहुत ही खतरनाक जगह में जाना है, ऐसा अभी माहौल नहीं है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट से IITians हो या अलग NITs या अदर जो बच्चे बहुत सारी तादाद में हमारे यहाँ रिक्रूट हो रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको अपने चैलेंज को आज आने वाले दिन में हम लोग के पास जो चैलेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए और आप भी चैलेंज लेने के लिए कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ आप इंडस्ट्री में आएँ और अपना करियर के लिए ये स्कोप ढूंढे। यहाँ हमको मिनरल प्रोसेसिंग में भी कोल इंडिया में इवन मेटलर्जिकल स्टूडेंट्स की भी बहुत आवश्यकता है। अभी हम लोग धीरे धीरे वासरी एंड अदर्स जो ये यूज़ कर रहे हैं वहाँ मेटलर्जी के बच्चे भी बहुत ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहाँ भी आपका स्कोप है। कोल इंडस्ट्री आप एक हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है अंडरटेकिंग, जहाँ करीब करीब 2.48 लाख एम्प्लॉयज आज के डेट में भी हैं। तो यहाँ वास्ट स्कोप है, आगे आने वाला समय भी बहुत यहाँ का उज्जवल है। तो इसमें इस इंस्टीट्यूशन में और इस वर्कशॉप के मार्फत से हम आप सबों को यहाँ जुड़ने के लिए भी आह्वान करेंगे। और इसमें अगर किसी तरह की जानकारी और भी आपको विशेष रूप से लेनी होगी तो हमारा ये वेबसाइट है अवेलेबल है, या फिर हमारे मेल हैं, मेल आईडी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक्सकर्शन टीम के तौर पर डॉक्टर रंजीत जी को भी बोलूँगा कि टीम को वहाँ भेजें। अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी आ रहे हैं, दूसरे IITs के काफ़ी टीम आ रही है हमारे माइंस में इसी चीज़ को देखने के लिए और जानने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड स्टेज में चल रहे हैं, वो देखना और जानना ज़रूरी है। तो ये सारे ये थे। इसके बाद और हाँ, एक और आपको यहाँ ये 3 पिक्चर आपको दिख रहे होंगे जो हम लोग बताएं कि OB में भी कोयला में तो हम लोग ये कर रहे थे सरफेस माइनर का यूज। अब OB ओवरबर्डन का भी रिमूवल सरफेस माइनर एज वेल एज वर्टिकल रिपर और रिपर के द्वारा अब किया जाना हो गया। विशेष रूप से मेरा माइन उसमें जहाँ पर मैं हूँ अंगुल का हिंगोला क्षेत्र, वहाँ वर्टिकल रिपर से ब्लास्टलेस माइनिंग ओपन OB का भी चालू हो चुका है। तो ये भी देखने लायक है, ये जानने लायक है, आप लोग उसको देख सकते हैं कभी भी। इसमें एक और देख रहे होंगे कि इनपिट क्रशिंग एंड कन्वेइंग सिस्टम। अभी हम लोग सरफेस तक ट्रांसपोर्ट का, जैसे कोयला पहले ऊपर आता था तब वहाँ CHP आप देखे होंगे कि वहाँ CHP होता था और फिर वहाँ से क्रशिंग होती थी जिसका डस्ट जनरेशन काफ़ी होता था और नियर बाई जो हैबिटेशन होता था उसको इफेक्ट करता था। तो आज वो उससे बचने के लिए हम लोग पिट में जहाँ माइन कटिंग कोल हो रहा है उसी के पास हम लोग इनपिट क्रशर लगा रहे हैं और उस क्रस्ट कोल को ट्यूबुलर कन्वेयर यानी पाइप कन्वेयर के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट करने का चालू कर चुके हैं। दूसरा एक और देखेंगे ये हाईवल माइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइनिंग के स्टूडेंट्स यहाँ होंगे तो उनको जानना जरूरी है। ये भी एक तरह का मेनलेस माइनिंग है और ये मेनलेस अंडरग्राउंड माइनिंग, अंडरग्राउंड माइन जो रिजर्व आप ओपन कास्ट से भी नहीं ले सकते हैं और सरफेस को डिस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते हैं।
तो वैसे माइन को कोयला निकालने का आखिर तरीका जो वैल्यूएबल रिजर्व है उसको क्या है, इसके लिए अभी एक टेक्नोलॉजी आया हाई वॉल माइनिंग, जिसको रैट होल माइनिंग कहते हैं। इस सिस्टम से बहुत कम मैन पावर लगाकर एक साल में करीब करीब 1 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसमें केवल 15 आदमी की ऑपरेटिंग हैंड की ज़रूरत पड़ती है और 1 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस करता है। इसमें सीमेंट के कंक्रीट बेल्ट्स होते हैं जो 300 मीटर अंदर तक हाईवाल आने, जहाँ पर आपका पहाड़ आ गया, पहाड़ के अंदर आप नहीं जा सकते हैं, जहाँ आपका स्ट्रिपिंग रेशियो फेवर नहीं करता है, वहाँ ये माइनिंग सिस्टम एडॉप्टेबल है। इंडिया में भी और कोल इंडिया में ये चालू हो चुका है। उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट चूँकि हमने ही बनाया था, इसलिए इसमें काफ़ी कुछ हमारा इसमें ये है। आप लोग कभी इसकी जानकारी और विशेष लेना चाहते हैं तो यू कैन कंटेक्ट मी आल्सो। ये आप देख रहे होंगे डंपर्स जो हैं, बड़े बड़े डंपर्स हैं। पहले हम लोग 35 टन डंपर से यूज़ करते थे। जब हम लोग कैरियर 1988 में स्टार्ट किया तो उस समय 35 टन बहुत छोटे डंपर चलते थे, और आज अभी हमारे इंडिया में 250 टनर्स तो आ चुके हैं, और नेक्स्ट प्रपोजिशन है कि 500 टनी कैपेसिटी के डंपर्स को हम लोग जल्द ही कोल इंडिया में लाएंगे। ये अभी दूसरे कंट्री में यूज हो रहा है, खास करके अमेरिका में हो रहा है, और आपका ये साउथ अफ्रीका वगैरह में भी यूज हो रहा है। बट अभी हमारे इंडिया में भी बहुत जल्द, अगले साल तक शायद 500 टनी के भी डंपर्स देखने को आपको मिलेंगे। दिस इज ए इलेक्ट्रिक डंपर्स, जो अभी हमने बताया कि क्या चेंजेज आने जा रहे हैं। डस्ट से बचना है, ट्रांसफर से फ्यूम से बचना है, और पोल्यूशन नहीं होने देना है। किससे? जो आप डीजल यूज करते हैं तो उसमें भी पोल्यूशन होता है, तो उसको से बचने के लिए अभी सारे जो पीओ ऑयल बेस्ड मशीनरी हैं उसको धीरे धीरे हम लोग कर्टेल कर रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं, और इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी संदर्भ में एक और चीज़ है, अभी हम लोग के यहाँ स्टडी पर चल रहा है, सीएनजी बेस्ड डंपर ऑपरेट होंगे। ये हमारे 2 माइन में सीएनजी का इनका अभी चालू हो चुका है। तालचीर फील्ड में ही इसका ऑपरेशन चालू हो चुका है, ट्रायल बेस्ड। ये अभी जैसे हमने बताया कि अगला जो हमारे पास इतना कोल रिजर्व है, तो एनर्जी का प्राइम सोर्स है। कोयला हम सॉलिड फ्यूल नहीं निकालेंगे, बिकॉज इंटरनेशनल भी प्रेशर है और हमारा भी कमिटमेंट है इन्वायरमेंट के प्रति। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किया है कि 2030 में धीरे धीरे हमको सॉलिड फॉसिल फ्यूल और पीओ ऑयल जो बेस्ड हैं उसको भी कम करने हैं। तो उसके संदर्भ में ये जो टेक्निक आप देख रहे हैं ये बहुत तेज़ी से लागू हो रहा है। अभी सीसीएल में आप जान रहे होंगे, यहाँ गोमिया के नज़दीक ये चालू हो चुका है, जिसको ओएनजीसी ने उसके एज ए पार्टनर काम करना चालू किया है हम लोग के साथ। इसी संदर्भ में है हाइड्रोलिक कोल माइनिंग। हालांकि इसमें भी ठीक है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इसमें हाई वाटर प्रेशर का यूज करके कोल की ब्रेकिंग होती है और फिर उसी से सलरी कोल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल माइनिंग टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन माइनिंग टेक्नोलॉजी है जो यूज हो रहा है। आपके बीसीसीएल में कुछ माइंस में इसको चालू कर दिया गया है। बाकी आप देख रहे होंगे कि पहले ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता था अंडरग्राउंड में ले जाके, आज हम लोग उसको सिमुलेटर से और वर्चुअल रियलिटी के साथ सेम चीज़ की ट्रेनिंग ऊपर सरफेस में दे रहे हैं, जो आप पिक्टोरियल व्यू से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, एंड नाउ चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन माइनिंग में ये डिजिटाइजेशन एंड माइनिंग सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा हम लोगों के यहाँ इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और एडॉप्ट कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसलिए यहाँ जो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी दूसरे ब्रांच के होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक के बच्चे, ईएनटीसी, कंप्यूटर साइंस, इनकी अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है इस इंडस्ट्री में। तो इसीलिए अभी बहुत बड़ा फील्ड खुल गया है कोल इंडस्ट्री में इन सबों के लिए भी।
एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स इन माइनिंग। आजकल हम लोग अभी लेटेस्ट जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आया है उसको सर्वे के लिए, और हमारा जो डंप फेल्योर होता था उसको स्टडी के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है। ये पहले से ही फोरकास्ट करके बता देता है कि उसके अंदर किस तरह का मूवमेंट चल रहा है। मान लीजिए स्पॉइल हीप है तो उस पर किस तरह से ये आपका मूवमेंट कितना है और कितना परसेंटेज हो रहा है, ये पहले से स्टडी कर लेता है। इसमें रडार सिस्टम भी हम लोग लगा रहे हैं, हमारे कुछ माइंस में लग चुके हैं, और अभी बाकी सभी माइंस जहाँ जहाँ मेगा माइंस हैं, जहाँ डंप्स, वो भी डंप्स बहुत हाई मतलब हाइट्स का होता है, वहाँ पर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ दिखला दें कि डस्ट कंट्रोल में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। जैसे ट्यूबुलर बेल्ट से बताया कि हम लोग कोल ट्रांसपोर्ट करते हैं और साइलो से लोडिंग करते हैं। ये एक साइलो की दिख रही है। बगल में कोल हिप्स में एक देख रहे होंगे कि एक फॉग कैनन है जो 100 मीटर थ्रो करता है। पानी की उसमें बहुत से कम कंजम्पशन होता है, एंड उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे डस्ट सेपरेशन होकर अपना फ्यूजिटिव नहीं रह पाता है। इसके साथ आप देख रहे हैं डंपर को हम लोग टायर व्हील का उसको वॉशिंग करते हैं आपका मेन रोड में आने के पहले। माइन के अंदर चलता है तो डस्ट चिपक जाते हैं टायर में, और वो डस्ट फिर टायर से घूमता घूमता और चलता हुआ हॉल रोड में काफ़ी डस्ट को जनरेट करता है। उसको अवॉइड करने के लिए ये आजकल व्हील वॉशिंग सिस्टम भी हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। ये हमारा इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो MOEF का हमारा परमिशन EC और FC का मिलता है, उसमें एक कैटेगरिकली आजकल कंप्लायंस के लिए दिया जाता है और हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारे आज एडवांसमेंट इन मेरे कोल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी संबंधित, और इसकी जो आने वाला फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स हैं इसके बारे में अभी आपको हमने कुछ हाइलाइट्स दिए हैं। आपको कुछ इसमें कुछ जानकारी फर्दर लेनी है तो इवन यू कैन आस्क मी हियर और फर्दर आल्सो। माय मेल इज अवेलेबल, माय वेबसाइट इज अवेलेबल। ओके, थैंक यू। एनीथिंग? ओके। Biomining, it is one of the new concept, and we are also adopting for energy, substitute of energy, not for coal. Bioenergy to run the light vehicles and equipments. Okay, thanks. Anything? जी, लॉन्ग वॉल माइनिंग सर आप देख रहे होंगे, आपको जानकारी होगी कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ इंडिया में। उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे यहाँ अंडरग्राउंड माइन जो हैं वो उसकी जो डेंसिटी होती है, कोल की डेंसिटी, वो अच्छे कोल खास करके इसको लगाया गया था BCCL में और ECL में, और एक माइन हुआ था ये SCCL का। तो वो क्या होते हैं कि उसको जितना ये चाहिए मतलब सपोर्ट के लिए, हाँ, इसको पावर सपोर्ट के लिए ये करने के लिए उसके जल्दी वो कोलैप्स कर जाता है मेरा ये। तो इंडिया में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये ब्रिटेन से हम लोग लाए थे देखकर, लेकिन यहाँ किसी भी माइन में चर्चा माइन, यस चर्चा ये था यहाँ का SCCL का, सारे जगह फेल हुए हैं। तो उसका ये सब्स्टिट्यूट जो मैं दिखाया हाई माल माइनिंग, वो रैट माइनिंग है। इनफैक्ट वो क्या बोल सकते हैं उसको, स्मॉल विड्थ का, छोटे विड्थ में और कम आपका ये करके रैट होल, जैसे चूहा पहाड़ के अंदर करके अपना बना लेता है रास्ता, वैसे ये 300 मीटर से 600 मीटर मेनलेस जाकर वो कोयला निकाल के ला सकता है। ये चीज़ अभी हम लोग उसको चालू कर रहे हैं, उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ गया है। 70% ओनली वी कैन एक्सट्रैक्ट 30% ऑफ कोल रिजर्व। तो उसमें अभी इसीलिए हाई जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बड़े माइंस के और बड़े डंपर या बड़े सॉवेल्स, अभी 40
40 क्यूबिक मीटर के आपके सॉवल्स भी आ गए, 500 टनर्स के हमारे डंपर आ गए। तो हमारा जो स्ट्रिपिंग रेशियो पहले 60 मीटर 100 मीटर तक करते थे ओपन कास्ट से, अब 500 मीटर तक हम लोग रिजर्व्स को ओपन कास्ट से करेंगे, एंड दैट इज इकोनॉमिकल। अभी वो IR में काफ़ी फेवरेबल है, तो कॉस्ट बेनिफिट है। इसीलिए इंडिया में बोला जो एबंडेंट रिजर्व है उसको अभी ओपन कास्ट से लेने की बात हो रही है कि हम लोग हाई टेक्नोलॉजी में जाएंगे और उससे लेंगे। एनीथिंग? ओके जी जी ओके ओके सर, ये नहीं है, बोलने दीजिए सर को एक। हाँ, ये नेचुरली अंडरग्राउंड में होता है, जहाँ पहले आदमी से ब्लास्टिंग करके तोड़ते थे या गैती से काट के जो कोयला कंसेप्ट यही है ना, कि कोलकाता लोग कोयला काटते थे, गैती से काटते थे, बास्केट से लोड करते थे, वो कंसेप्ट अभी खत्म हो गया। तो अब क्या है कि वहाँ हमको मेनलेस वर्क करना है। कैसे करें? ह्यूमन इंटेंसिव जो है वर्क, उसको कम कैसे करें? उसके लिए हाइड्रोलिक माइनिंग है, हाई वाटर प्रेशर से उसको तोड़ेंगे और उसी सैलरी से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे ट्यूबुलर बेड के थ्रू। जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, नाइस। अरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में अभी जिन लोगों का पार्टिसिपेंट है वो रजिस्ट्रेशन का ले लेंगे और लंच के लिए सब लोग साथ में चलेंगे। ओके, तो ये सेशन अभी समाप्त होता है। लंच के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर कितने बजे मिलेंगे? अभी कितना बजे? 2:30 बजे मिलना था, तो 3 बजे मिलेंगे, थोड़ा देर हो गया है। तो 3 बजे एग्जैक्ट एट द 3 PM we will be here after lunch. Okay, let's go. Everyone, please be seated. You will get the coupon, lunch coupon will be distributed here only. Also, the kits will be provided. So please be seated. For registered candidates. So please be seated.